लंच के बाद स्ट्रीम में वापस स्वागत है। मेरा नाम है केड मिस्टर 90 और हमेशा की तरह ये शुरू करने से पहले थोड़े लिंक्स वो सब डालने हैं। एक बार वो हो जाए और ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, लगभग हो ही गया। हाँ, लिंक्स डाल दिए हैं, अब बस ये खोलना है लाइव स्ट्रीम का और अब सब कुछ हो गया। स्टार्ट रिकॉर्डिंग और फिर लोड करते हैं। इसका बात करता हूँ, ये इतने ज़्यादा इसका दिखा रहा है 3 अलग अलग। ओह, इसके वजह से 3 दिखा रहा है, ये 3। You and I Have more in common than you might think. Not only are we both masters of the blade and devilishly handsome to boot, but we are both the second people to bear our respective names. What? What? You didn't think Rosena Dalmil was my own invention, did you? It was the name of my master. I inherited it from her, along with her title and her smithy. Ensuring that her name lived on was the least I could do after all she did for me. She plucked me from the streets and put my less than nimble fingers to work making blades instead of trouble. Alas. She was to leave my life as suddenly and unexpectedly as she had entered it. I swore to follow in her footsteps, that I might change others' lives as she had mine. That is why I keep our forge alive, why I play the desert here, why I care for the orphans of Dalmil. Indeed, I had thought my obligations to Renz and Rika to be my most pressing concerns. That is until the infamous Sid made a surprise reappearance. Rather muddied the waters. Still? I suppose there's enough of me to go around, but do forgive me if the desert here isn't always at your beck and call, won't you? Ours is a blessed corner of the Velcroy. A veritable oasis, with clear running water and natural hot springs. I don't doubt that people have been gathering here since long before the founding of the Republic. Since it was founded, they've been gathering in even greater numbers to serve the needs of the miners who worked Drake's Fang and the soldiers who guard it. And serve them they did, lining their coffers far from the prying eyes and grasping fingers of the Republican excisemen. Not that edicts from Randella carry much weight in these parts. Dalmil has long been something of a law unto itself. Here, those with the most money or the most friends make the rules. At least they did. Until Kupka built that castle of his at the heart of the Mother Crystal. Dalmil has been Titan's fiefdom since then. And while his men may be liberal with their coin, they are anything but in the exercising of their authority, which, as I'm sure I don't need to tell you, is absolute. So, you see why those with people's best interests at heart took it upon themselves to organize their own protection. My predecessor, chief among them. How very fitting. That the noble soldiers of Dalmikia and Walod, partners in arms on so many battlefields, should also become partners in crime. Still, the merchants of Dalmil will be relieved to see them brought to justice. Many have been driven almost to ruin for want of crystal. I'm sure they would all be rushing to thank you for the service you have done them, if of course they had any idea what you had done. Of course. As long as we remain reliant on the power of the crystals, we leave ourselves open to such exploitation. But people are greedy, needy creatures. There's simply no other way. Clive, you must bring down each and every mother crystal in the twins and put an end to the people's thoughtless dependence upon them. Do try not to disappoint me. Best of luck. हाँ, नहीं अभी भी दिखा रहा है। जिनके पास एक से ज़्यादा डायलॉग ऑप्शंस होते हैं उनका ऐसा होता होगा क्या? मैंने कभी बाकी का देखा नहीं है जिनका एक से ज़्यादा होते हैं। What is it now? Farewell now. तो हाँ, जब सिड मेरे हिसाब से ये रूज़मान ये नाम क्या था? Clive. You and I. What? रूजेना डालमिल. Alas. जब सिड रूजेना डालमिल से मिला था वो मोस्ट प्रॉब्ली इसके मास्टर से मिला था, जो एक औरत ही थी. Is it true what I'm hearing? That the men of the rock were carting off our crystals for themselves? It would certainly explain why we haven't been getting our fair share of late. चलो इससे बात हो गई, अब ये करते हैं. I've never even forged a butter knife before. तावा अप्रेंटिस स्मिथ. उधर क्या हो रहा है उसको ग्राफिक्स को दीवार के टेक्सचर को एक्चुअली.
Perhaps Forge Master Luber's having fun at my expense. I wouldn't put it past him. Neither would I. Oh, wait. Are you Clive? Sorry, my mind was elsewhere. I'm Sava, Master Luber's least accomplished apprentice. Soon to be former apprentice if I don't pass this test. Maybe I'm just not the resourceful type. People are buying up weapons faster than the Briar's Kiss can forge them, and here I am, unable to make a decent bit of kitchenware. He wants me to make a carving knife, one that embodies the spirit of Dalamil. Whatever that's supposed to mean. Suppose you have any idea what he's on about, do you? I'm afraid not. Never mind. Thought I'd ask. It was that or pack my bags. हाँ मदद कर लेते हैं इसके इसलिए इससे बात Give की you a hand if you like. I know how busy the Briar's Kiss has been, and that Lubor needs all the capable hands he can find. I'd be a fool to refuse. So, where do we start? Good question. If I'm honest, I've never made any kind of knife before. And then there's this little riddle to keep in mind. The spirit of Dalamil. Nothing is ever simple with that man. The way I see it, there's only one way we'll be solving Lubor's puzzle. We need information. The more the better. You're right. There's no point fumbling in the dark, I suppose. Now, who to speak to first? Well, there's plenty of folk in Dalamil who use knives for a living. There's the butcher, of course, and any number of cooks. They're bound to have an opinion or two about the tools of their trade. All right. I think we have a plan. Let's get to it, shall we? I'll talk to every cook I can find. You speak to the butcher, and anyone else you can think of. All right. Good luck. Let's hope that someone says something useful. प्रायोरिटाइज करना भूल गया Trust Lubor to take a simple test and turn it into a riddle. carving out an Better issue. get to it. Speak with the townspeople. Finest fabrics, fresh The from most the fragrant herbs and spices from the breadth of Fresh bread, warm from the oven. Here, have a taste. Pleasure. ये butcher है मेरे हिसाब से. Welcome, sir. What can I do you for? A question, if you don't mind. I need to know what makes a good carving knife. You a blacksmith or something? Something, I suppose. Fair enough. Knives, is it? First and foremost, it's got to hold an edge. Most knives will make it through fat, no problem, but sinew dulls cheap steel in no time. Give me a blade which can slice through anything that crosses my chopping block, and I'm a happy woman. So a knife that stays sharp. Makes sense. Put a knife with an edge like Odin's razor in my hand, and I'll make short work of any carcass. सही है. एक मिनट. दो लोगों से बात करना है. एक butcher बोला था और cook. Cook कहाँ मिलेंगे? और ये रहना. नहीं ये तो एक और separate side quest के लिए. The baths are, closed for scrubbing. Please bear with us a little longer. और स्क्रबिंग के लिए नहीं है, किसी कोई और रीज़न है, और वो जो भी रीज़न है वो ये साइड को शुरू करने से मालूम पड़ेगा. ओके, कुक्स कहाँ पे होंगे? यार आगे पीछे करते जा रहा हूँ, एक जगह रहता हूँ. Ha! They've opened the gate. Lubor was true to his word. ओके, यहाँ पे नहीं है मेरे हिसाब से. वो जो इन था उसके पास शायद मालूम पड़ेगा. ओह नहीं, इन तक नहीं है वो ये. शिट. आई मीन ये एक तरीके के कुकी हैं पर ये ब्रेड से ज़्यादा. Made from the stoutest stoneware. ओके, तो फिर कुक कहाँ मिलेंगे मुझे? यहाँ पर ही आना चाहिए. We can make our way back to the Fang now, at least. Yeah, but what would be the point, with the mine still closed?
यहाँ तक आ गया था मैं, इसके एज तक, और फिर वापस चली गया। थोड़ा और आगे आ जाता तो ये हो जाता है हंटर। ओह कोकनी हंटर, डेफिनेटली हंटर्स चाकू इस्तेमाल What is करते it? हैं। I'm in no mood for chatter. Sorry. Do you mind if I ask your trade? Hunter, why? I have a question. Can you tell me what makes a good carving knife? I assume you use one out in the field. Has to be able to put up with some punishment. Can't be dealing with a brittle blade, not while I'm on the hunt. If your knife snaps every time you use it, you'll be spending coin as fast as you make it. Times are hard enough as it is. Thank you. I won't keep you any longer. All business, eh? Man after my own heart. चलो वापस आते हैं। A carving knife should be hard-wearing and hold an edge. Hardly a revelation. Let's hope Sava had better luck than I did. Just look at the detail. चलो देखते हैं। मुझे लगता है उसको भी कुछ हुआ होगा। My carpets have कितने brighter ज़्यादा है place यार। in Castle Dasbog. You too can live like a... कितने ज़्यादा क्या बोलते हैं डायलॉग्स थे उधर, एक के बाद एक आते ही जा रहे थे स्क्रीन में। So, how'd it go? You learn anything useful, or should I be looking for a new trade? Only that a blade should be durable and stay sharp. But I don't see how that relates to the spirit of Dalamil. I didn't have much luck either. All the cook said was that he needs his knives to be light. Too heavy and they do his shoulder in. So we're no better off than when we started. Perhaps Lubor didn't mean anything with his Dalamil remark. But that can't be right. I've bandied enough words with the man to know that he chooses them carefully. No. We must be missing something. Something right in front of our noses, most likely. No doubt you're right, but I have to make a start soon. I can't put off making this knife forever. Agreed. Lubor wouldn't like that much. Right. I've been trained to work iron. The cheap stuff, mind. But it's hardy enough if you don't hammer it too thin, and it sharpens up nicely with a bit of effort. Trouble is, it's either durable or it's light. Meaning someone is going to be disappointed. Forge Master Lubor, probably. Is there no one else you can turn to? Someone who knows their metals, perhaps? The other apprentices know better than to help me with my test. But maybe there is someone I could turn to. A merchant, a favourite of Forge Master Lubor's, who sells metals to tradesmen passing through the Valcroy. I bet she'd know a thing or two. Close to Valcroy Desert for the metal Is it true what I'm hearing? trader. Oh. I see you wear the Desert Rose. You won Oh, ye banda. Lubor's trust then. I assure you, Sid II, you will find it more valuable treasure than any gold or jewels. चलो ये उसके अंदर है क्या? यस, इस चीज के अंदर है और इसके लिए मैं गलत रास्ते से जा रहा हूँ। ओए क्या बोलते हैं उसे? रेस्ट पॉइंट। For the best drop in Dalamil, visit the final sting. Best drop? कोई आइडिया नहीं उसका मतलब क्या है। Let's go. Fly, Ambrosia. शुरुआत हुई किसी म्यूजिक की और फिर बंद हो गई। पूरा करते रहना चाहिए यार इसके लिए। जैसे फाइनल फैंटेसी 15 में जब भी चॉकोबो को के ऊपर चढ़ते हैं ना, या राइड करते हैं मेरा मतलब, तो म्यूजिक बदल जाती है। म्यूजिक अच्छा था वो चॉकोबो राइडिंग वाला म्यूजिक फाइनल फैंटेसी 15 में। Straight home now. ओके, यहाँ पर ही है।
Search the Velcroy Desert for the metal trader. Who do you think those soldiers were? ओके यहाँ पे नहीं है. ये कैसे हो सकता है? वो रहा. ये सावा ही है. Any luck? Or will you be needing help with your bags? Well, I asked her, but... you tell him. If you're looking to make a knife that will impress a master like Lubor, there are options. They're just not that viable. Featherlight adamantite knives will get passed from generation to generation, never needing so much as a lick of the whetstone. But adamantite ore is unique to ash, so it doesn't come cheap. And it's beyond my skill to handle. Unique to ash. Are there any materials unique to Dalamil? Something which could be mixed with iron to refine it. Make it lighter. What are you getting at? You said that Lubor trained you to work iron. Then that's what he'll expect you to use. But he would have known that it would either be too heavy or too brittle for a carving knife. Perhaps his Dalamil remark wasn't a riddle, but a hint. If it's cheap metal you're using, then there's always limestone, I suppose. Folk first settled Dalamil to get at her mineral deposits. And, if you know the trick, it can be melted down in the furnace to drive out impurities from low-quality iron. Bloody hell! That must be it! I don't suppose you know the trick, do you? It's hardly my speciality, but I've been around enough blacksmiths to know how it works. Looks like I've got some learning to do. Clive, I hate to ask after all that you've done for me, but... The limestone? Fine. I can hardly abandon you now. Besides, I want to know if this is the answer to Lubor's little riddle. I can't thank you enough, Clive. You'll have no trouble finding limestone over in the terraces. The place is bloody made of it. Then I suppose I'll meet you back at the forge. Right you are. I'll see you shortly. So, do you crush it up, or just throw it in the furnace? This is no good. Is it true what I'm hearing? Hoping to get out of the heat for a little while. Our crystals for themselves? It would certainly explain why... My carpets. The most fragrant herbs and Fresh bread, warm from the oven. Made from the stoutest stoneware. Sweet incense. Wax candle. We should get going soon. Do you have water? I've got a crystal. So long as we stay out of the Deadlands, we'll be all right. Ah, I'm not too late. What is it, Lubor? A question that I neglected to ask earlier. Where is it that you're bound? To Drake's Fang. To finish Hugo Kupka. Just as I thought. Then allow me to share a secret. Drake's Fang is currently riddled with royalists. Talmeki and Walud are allies, and as you have seen, their soldiers work hand in glove. But no nation has ever before allowed a foreign army to make a barracks of its holiest of holies. Not by choice, at least. And there's more. My man on the inside of the Fang has failed to report for several days. I fear there may be more trouble lying in wait for you on the road ahead. Isn't there always? If you're determined to beard the lion's den, then promise me one thing. That you will enter via the mines, where the guard is lightest. I've lost one Cid already. If I lose another, people will start to think me careless. I don't plan on dying. Not before Kupka does, anyway. Well, so long as you have a plan. Well, ये main quest का था.
Drake's Cutscene. Fang should be just beyond these springs. Shall we press on? Nope. पहले साइड क्वेस्ट, फिर वो ड्रेक्स फैंग का करेंगे. मुझे मालूम नहीं था यहाँ पे ऐसे कट सीन होगा एक और मेन क्वेस्ट का. ये सॉल्ट लग रहा है लाइमस्टोन से ज़्यादा. One rock looks a lot like another, but hopefully this is what Sava needs. ये सॉल्ट बेड्स की तरह लग रहा है, जहाँ पे वो वाटर को पूरा क्या बोलते हैं, इवेपोरेट करते हैं सॉल्ट के लिए, ऑफ कोर्स. We should get going soon. Do you have water? Finally, we'll be able to get what's done. Deliver the spring lime to Sava. Well, मैंने स्प्रिंग लाइम भी देखे नहीं है कभी, तो क्या पता वैसे ही होते होंगे. उन्होंने ऑफ कोर्स रिसर्च किया होगा, गेम जो इन्होंने बनाया. चलो. I hear you and the Master are working together now. Glad to have you on board. अब इसे दे देते हैं. I wasn't sure how much you'd need, but I hope this is enough. A brittle white stone that grows in the restorative hot springs near Dalamil. When dried and milled into a fine powder, it can be added to molten iron to purge the metal of impurities. You are one of the good ones, you know that. You and that merchant both, she's got quite a gift for teaching that one. Now, time to see if limestone is the secret weapon we were hoping for. That'll do, I reckon. A knife forged from the very rocks of Dalamil. Her spirit, if you will. It's a fine-looking blade. I only hope Master Lubor agrees. That sounds like my cue. And just as well. I was getting tired of waiting. I'm sorry, Forge Master Lubor. Let's take a look then, shall we? First things first, Sava, do you think this is a carving knife worthy of the fine people of Dalamil? I'd like to think so. But what do you think? What do I think indeed? It's sharp-ish, but it won't last long with hard use. And it's heavy, heavier than it should be. You might not think it just to hold it for a moment, but sell that to a cook and you'll never hear the end of it. It looks like someone paid a visit to the terraces. The limestone was a step in the right direction, granted, but one that still leaves you short of the mark. And I was so certain I had it all worked out. I don't know who you found to teach you that little trick, but it certainly shows initiative. Next question. How much do you think I would charge if I'd made this? Well, if it took you even a fraction of the time it took me, I would say you could demand a heavy purse. And who would be able to pay that? The butcher? The hunter? The cooks over at the inn? Dalamil is home to humble traders, not wealthy lords and ladies. Rule number 1 in any business, Sava, know your customers. Yes, Forge Master. This is just about passable. But only just. I'd say you're worth keeping around a little longer. Starting tomorrow, you'll have an anvil of your own. I will. Thank you. I was wondering, what would you do if you were asked to forge a carving knife? I'd do what I always do. Ask who it's for. If it was for the butcher, I'd make sure it holds an edge. For the hunter, I'd make it as tough as Titan. For the cook, light as a feather. And for the nobleman, भाई कैसे हो? माफ I'd करना, make it cost an absolute fortune. थोड़ा कटसीन देख रहा था.
Lubo's a master, all right. It looks like congratulations are in order. Sunday कैसे गया I आपका? couldn't have done it without you. So much for the Forge Master's riddle, though, eh? The spirit of Dalamil had nothing to do with limestone or anything much at all. क्या किया सुबह से आपने? I had you run around for no good reason. You've passed your test. That's all that matters. You'll have a forge of your own in no time. And when I do, I'll craft you the finest carving knife you have ever seen. देखिए आप क्या बोल रहे हैं? Thank you, Clive. I honestly don't think I could have done it without all your help. अब जाके देखते हैं ये बंद क्यों है बाथ हाउस. Finest fabric. Take a sniff, good sir. Made from the stoutest stoneware. Everything I've worked for. All those years of toil. Every coin I've ever earned is tied up in this place. Are you all right? The baths are closed. Leave me be. On second thought, perhaps you are just what I need. Might your services be for hire? That depends on the job. पहले भाई ये वीकेंड में क्या किया अभी तक? My business, the baths. The water's turned scalding hot and all the crystals in Dalamil wouldn't be enough to cool it. I've no doubt that my woes stem from the water's source. But I can't go and investigate for fear of my customers thinking I've abandoned the place. I'm bound to these baths in more ways than one. I beg of you. Go to Dusnoff Terraces. Tell me what you find there. All right. I'll go and take a look. Wonderful. It's not far. Leave the market by the south gate. The smell of sulfur will guide you the rest of the way. These baths are all that keep me from an ignoble end in a debtor's prison. My livelihood, my very life. कोई टीवी सीरीज या मूवी ऐसा कुछ नहीं देखा? Hot water. In all my years tending the baths, I've never known anything like this to happen. Please, find out what's gone wrong. कहाँ जाना है इसके लिए? ओह काफी आगे जाना है. वैसे बाना भाई आप कोई स्पोर्ट्स फॉलो करते हो फिर? Finally, we'll be able to get what's क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल ऐसा कोई स्पोर्ट्स फॉलो करते हो? Ready, girl? Run like the wind. ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए होपफुली ये. क्रिकेट तो फिर ये आईपीएल में किसे सपोर्ट कर रहे थे? डैम यहाँ से दिख रहा है किस रीजन की वजह से इतने गर्म हो रहे थे. इन तीनों को मानना होगा. हाँ आईपीएल में कौन से टीम को सपोर्ट करते हो? अगर आईपीएल देखते हो तो सीएसके. तो आपको तो बहुत मज़ा आया होगा, जीत गए. सीएसके 5वीं बार आईपीएल जीत गए. You deserve a rest. चेन्नई से हो क्या आप? इसलिए सपोर्ट करते हो या फिर धोनी की वजह से सपोर्ट करते हो सीएसके को? मेरे मैनेजर जो है वो That explains the heat. इतने ज्यादा आ गया अचानक. जा 2 3 4 और ये बहुत अच्छा नहीं जा रहा. जा जा. मेरी मैनेजर जो है वो भी सीएसके को सपोर्ट करती है धोनी की वजह से ही, और मैं भी बेसिकली धोनी की वजह से ही सपोर्ट करता हूँ सीएसके को.
Cold feet. Oh damn. और भी है क्या? ओह ये कहाँ से आ गया? धोनी पर मोस्ट प्रॉब्ली अगर खेलेगा तो सिर्फ एक और सीजन और, काफी बूढ़ा हो गया, उसने खुद भी कहा था। काफी क्या बोलते हैं, बॉडी पेन्स उसको बहुत हो रहे हैं आजकल। बाद मारते रहो। कहाँ जाते जा रहा, बार बार नीचे गिरते जा रहा। पूरे के पूरे इसके ऊपर ही डालूंगा मैं। और ये हमारा लेवल अप। यस 32। Let's cool things down a bit. Let's hope it's enough to keep the baths from boiling. गलत बार बार नहीं, सही करा था, पर बस एक बार दबाना, ये आदत नहीं है यार, बस एक बार दवाई रखने की। ये डेस्नी की आदत है दवाई रखना है, बीच का वो जो टच पैड है, दवाई रखना वो मैप के लिए। This is no good. Is it true what I'm hearing? The most fragrant herbs and fresh bread. तेरे बाथ हाउस को बचा दिया हमने, अच्छे से धन्यवाद देना हमें। The scrubbing is almost finished. We appreciate your patience. I was hoping we'd be seeing you again. The baths grow more bearable by the moment. It won't be long now before we are back to business as usual. I'm glad to hear it. Now, tell me this. What did you find at the terraces? What threatened to make me a pauper? Not what I expected, that's for certain. मैं उनके नाम भूल गया, उन्हें क्या बोलते हैं? फायरबॉल बोल दो सीधे। You tell a fine story. That's not to say I don't believe you, though. Creatures made of flame, eh? That's something new to worry about. But I've burdened you with my worries enough already. Here, a small something by way of thanks. Right. It's high time I got back to work. With a little luck, the day might yet be salvaged. चलो, अब मेरे हिसाब से सारे साइड क्वेस्ट हो गए, तो वापस मेन क्वेस्ट में चलते हैं। ओह स्कारलेटाइट, यस, अब मैं वो बना सकता हूँ आखिरी गियर। It's just as well I sent you to the terraces in my stead. It sounds like I'd have been burnt to a crisp. The scrubbing is almost finished. हाँ, ठीक है, जो बोलना है बोल। तेरा बात, तुम्हारे बात हाउस को मैंने बचा दिया। अभी के लिए कोई और साइड क्वेस्ट यहाँ पे भी नहीं है। हाँ, और कहीं और भी नहीं है। यहाँ पे नए वो आए हैं क्या? यस, थोड़े और हंट बोर्ड में आ गए, वो बाद में कर लूँगा, ये वाला मेन मिशन करने के बाद, बेसिकली टाइटन को मारने के बाद। Come on, girl. ये स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे थे ना, मेरा यूजुअली, तो मैं कोई भी अगर स्पोर्ट्स को फॉलो करता हूँ ना, यूजुअली जो उस समय ज़्यादातर स्पोर्ट्स, सारे स्पोर्ट्स नहीं, उस समय जो सबसे अच्छा कर रहा होता है, मैं यूजुअली उसका फ़ैन हो जाता हूँ, या फिर जिसके बारे में पहले सुनता हूँ। तो जैसे बास्केटबॉल में मैंने माइकल जॉर्डन के बारे में सबसे पहले सुना था, थैंक्स टू स्पेस जैम ऑफ कोर्स, तो मैं उसका फ़ैन हो गया। और टेनिस में जब मैंने पहले शुरू किया था, रॉजर फेडरर था।
तो मैं रॉजर फेडरर का फ़ैन हूँ और ये देख के कि दोनों के दोनों राफेल नडाल और नोवाक जोकोविक उसके आगे जा चुके, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो क्या कर सकते हैं, बंदा 40 के ऊपर हो चुका है, अपना कुछ डिफेंड भी नहीं कर सकता और काफ़ी समय तक कर भी नहीं पा रहा था उनके खिलाफ कुछ भी, भले ही मैं जितना भी चाहूँ कि वो कुछ कर पाता। बस क्रिकेट में एक है जिसका मेरा वैसा नहीं है। क्रिकेट में मेरा पहला फेवरेट प्लेयर था सचिन और उसके बाद अभी है करंटली धोनी। Broken down, you say, from the weight of its load? Aye. The guards are furious about it. You do well to steer clear. Well, if it's blocking the road, it'd be a wasted journey anyway. चलो, वो साइड वाले जो हमने देखा था अभी, ये टूटे हुए कैरवान, उसी के बारे में बात कर रहे हैं मेरे हिसाब से। Run like the wind. मैं काफ़ी स्पोर्ट्स फॉलो करता हूँ, देखता नहीं हूँ, बस उनके ख़त्म होने के बाद ऑनलाइन चेक करता हूँ कि रिजल्ट्स क्या है। बास्केटबॉल, टेनिस थोड़ा बहुत करता हूँ, फिर ओह बेसबॉल भी, और एक और कर सी, हाँ There it is, Drake's Fang. Kupka will be hiding inside. Along with goodness knows how many guards, all on highest alert, you'll need to keep your wits about you if you're to reach him. So be careful. I will, Uncle. Before you go, Clive, allow me to apologize. After what befell at Phoenix Gate and the crisis that followed in its wake, I fled. I retreated to my counting house and danced attendance upon the vicereine in the hope it would bring me favor. I betrayed my nation to save my skin, like the coward I am. And I'm sorry. Uncle, please. It's not too late, Clive. Rosaria is yours by right, and there are those that would help you to take it back. Had I the courage of my brother, I might already have done so. But that ship has sailed. You, however... No. Forgive me, but I cannot. I fight to build a new world now. A better world. Where men can live and die on their own terms. I was raised in a nation that strove to improve the plight of bearers. Only later did I realize that spark of freedom did not arise by chance, but was kindled by my father. You would see me follow in his footsteps. And that is exactly what I mean to do. Not by ruling Rosaria, but by extending his ideals to the whole of the twins. Though every soul in the realm may judge my actions heresy, I am certain my cause is just. You really are just like him, you know? Thank you, Clive, for coming back to me. I am proud to call you nephew. Well then, this is where we must part ways. Wish me luck in convincing my Canvarian friend to share his considerable talents. I mean to plunder his coffers and prove myself worthy of a place in your merry band. Till then, my boy. Till then, go safely, Uncle.
And you, nephew. We have much to catch up on, you and I. I shall expect you to regale me with the tales of all your adventures when next we meet. You can regale me too, Torgal. I'm coming for you, Kupka. The jaw. This gaping chasm worn through ageless stone serves as the Republic's sole gateway to Drake's Fang. ये डेफिनेटली बाकी सारे मदर क्रिस्टल्स की तरह बिल्कुल नहीं दिखता। मैं ओह शिट, इसके बारे में पढ़ना भूल गया मैं। मुझे लगा ये नॉर्मल पहाड़ थे जब मैंने देखा उसे पहले। ओह उन्हीं की तरह दिखता है ये। Why do they start? What has that gutter rat done to me? Out of my sight, wench! I'll kill you, Rossfield! I'll rip out your heart! I'll tear you limb from limb! Peace, Hugo. The table shan't hurt you any longer. He sought to humiliate me. Me! If you hadn't interfered, he would be dead! You truly believe you would have triumphed had the battle continued? Titan would have ground him into dust! And how would he have done that without his head? Shut up! You weren't strong enough, and you call yourself a dominant. Or rather, you did. You mock me, Harbert. Do you see, Hugo? You are weak. Fuck! But so long as that fire burns within you, there is still hope. There may yet be a way for you to take your revenge. Tell me, what must I do? Please, I'll do anything. Just tell me. The heart. What of it? A mother crystal's heart is the most concentrated source of ether in all creation. Perhaps you could take advantage of that. Of course, the crystal would not yield her blessing to any ordinary man. But then, you are no ordinary man, are you, Hugo? Clive Rossfield stole your power, but others have suffered a similar fate, and still managed to find the strength to conjure their icon. Like Benedicta Harmon. She too drank of the ether and gained a power beyond human understanding. She did. Benedicta. Benedict. I'll do it. My love. I'll avenge you.
along now, Hugo. You need only follow the light. Muthos is here. Very well, it shall be so. You may leave everything to me, Your Majesty. चलो ऑक्स को मारने का समय आ गया। Into the darkness. चलो। Are the beastmen part of the Waluda army now? How the hell did that happen? They spotted us. We need to pick up. और ये मरा। क्या? सब मर गए? वो सिंपल था। वैसे भाई ना भाई, अगर यहाँ पे हो कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। कुछ पूछना हो तो। Taken over the entire mine, हाँ। मिनी मैप नहीं है, मतलब यहाँ पे वापस नहीं आ सकते, सब कुछ ढूंढना होगा। और मैं क्या इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। Wicked winds! आजा। Oh shit. So much for the men of the rock. Dalmekia's finest. Dalmekia's finest. सबको मार दिया। मुझे लगा था इसके टांग को काटा हुआ है, वैसे रखा पर नहीं, ये बस नॉर्मल वैसे है। मेरे हिसाब से ऐसे क्या बोलते हैं, टूटे हुए पाँव को करने के लिए सेपरेट एक मॉडल चाहिए होगा, क्योंकि ये उसकी तरह नहीं है। डेड स्पेस या फिर ये प्रोजेक्ट क्या था उसका नाम, कैलिस्टो प्रोटोकॉल, उनमें क्या बोलते हैं एनिमीज का मॉडल ही ऐसे बनाया है कि उसके हाथ पाँव और प्लस जो भी उनके टैलेंट्स वो सब है उन सबको तोड़ सकते हैं। मॉडल ही वैसा है। इधर फाइनल फैंटेसी के वैसा मॉडल नहीं है।
और फाइनल फैंटेसी वाले जो मॉडल्स हैं वो पूरा एक ही मॉडल है, कोई डिटैचेबल लिम्स वो सब वैसा नहीं है इनमें। तो फिर अगर इन्हें बिना पाँव का बनाना होगा कोई मॉडल तो वो पूरा ऑलमोस्ट स्क्रैच से ही बनाना होगा शायद, इसलिए ऐसे वाले में वो करते नहीं है टूटे पाँव वो सब, पूरा का पूरा ही रहता है इंसान का मॉडल। ओके, कहाँ पे जाना है मुझे? ओ वो रहा, इसे नहीं खोल सकता। और नहीं, ये नहीं, मैं ये सोचा था इसे खोलना है पर नहीं, ये रहा टूटा हुआ दरवाजा। एक दिख रहा है बंदा बड़ा उधर, बॉस है क्या वो? Animals. You should never have left Ash. Stay down. ओके, ये है ना 3 आगे कम से कम। अबे किसने मारा मुझे? अबे यार क्या? अबे इससे मारना है यार मुझे, इससे पहले मारता हूँ। सही में? ओह नहीं, जा अब यही बचा है बस। ये मारा, पहले उस ऊपर वाले को मार। ओह शिट, सब मरो यार, सब मरो अब। मुझे लगा मैं उसके पास हूँ। क्या? अलविदा। ऊपर वाले को किसने मारा? मैंने तो नहीं मारा था उस ऊपर वाले को। ओह, मुझसे मर गया ना, फ्लेम्स ऑफ रीबर्थ जो मैंने इस्तेमाल किया था। यहाँ पे और क्या क्या है? रास्ता क्या है? पहली बात ये क्या लगता है नहीं है। तो अब कहाँ जाना है? ये रहा ना रास्ता। तो उससे पहले कुछ भी है यहाँ पे उठाने के लिए? नो, कोई संदूक नहीं, कुछ नहीं। इतना वैसे छुपा के भी नहीं रखते ये लोग, मुश्किल भी नहीं होना चाहिए। कोई बॉस फाइट नहीं, बस ये इसके लिए ऐसे क्यों? लाइटनिंग रॉड, द फेवर ऑफ लाइटनिंग। एक मिनट रुकना, मेरे पास लाइटनिंग रॉड है भी क्या? एक मिनट, ये कैसे लगा सकता हूं इधर? ये क्या बकवास है? वाह भाई वाह, रामुन के ये अटैक वाले में मैं रामू के अटैक वाले में मैं फिनिक्स का और गरुड़ा का भी लगा सकता हूँ अगर चाहता हूँ तो। वाह भाई वाह, जरूरत तो नहीं है, और मेरे पास लाइटनिंग नहीं है अनफॉर्चुनेटली। लाइटनिंग रॉड के लिए create a ball of lightning that upon being struck chains lightning to other nearby enemies.
ओके ओके 120 चाहिए उसके लिए, पर मैं कर रहा हूँ इसका पीछा। 2300 चाहिए जो। फ्लड भाई कैसे हो? सब कुछ सही चल रहा है आपका? मेरा तो एकदम सही है। पीठ दर्द बहुत हो रहा है आज, उसके अलावा सब कुछ सही चल रहा है। Stairs. This must be the way out. स्टेज के ऊपर 1 मिनट और। वर्कआउट नहीं, मैं सैटरडे संडे वर्कआउट नहीं करता हूँ, पर हाँ वीक के बीच में से काफ़ी पीठ दर्द हो रहा था, बल्कि फ्राइडे को इतना पीठ दर्द हो रहा था कि मैंने मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं कार्डियो किया और कुछ नहीं। और आज सुबह उठा तो बहुत दर्द हो रहा था, मुंह लगाया, पर मैं सुबह स्ट्रीम ना करने की सोच रहा था असल में। मैं बल्कि सोच रहा हूँ कि कल भी इतना ज़्यादा दर्द हुआ तो मैं कार्डियो करके सीधे वापस आ जाऊंगा। ओह oh shit. I won't be sneaking past this one. How did it get in here? To me, boy. Nice try. और नहीं। ओ बिल्कुल डॉज। ये है पता नहीं कौन सा स्किल दिया यार, पर ये मजा आ रहा है ये इसको करते हैं। ऐसा आपका संडे कैसे गया है सर भाई? वीकेंड में क्या किया? कोई प्लान्स थे जो अच्छे से गए वीकेंड के? Nice try. Oh, nice. मारते रहो। 30,000 पहुंचना चाहता हूँ मैं कम से कम। 32,400 बहुत अच्छे। Oh shit 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 shit. दूर जाओ। Oh, ये कौन सा हमला है इसका? इतने आसानी से नहीं करने दूंगा मैं। Oh shit shit shit. इसको लगभग मैंने स्टैगर कर दिया और फिर ये अपना ये वाला हमला करने लग गया। इतना आसानी से नहीं। ओ नहीं। ये मिस हो गया, बहुत अच्छा। इस बार भी ओह मर ही गया। मैं बोलने वाला था इस बार 30,000 के ऊपर नहीं जाएगा डैमेज, पर ये मर ही गया। कितने मेरे वैसे 2200, बस थोड़ा और चाहिए फिर मैं ये ले पाऊंगा जजमेंट वोल्ट। अब कहाँ जाना है? यहाँ से तो मैं आया हूँ शायद।
फिर जाना इस तरफ होगा फिर, और कहाँ हो? नो ओ ये रहा ना। सर भाई यहाँ पर हो तो वीकेंड के प्लान्स क्या थे आपके वैसे? By the flames. Come on, Torgal. Kupka never did do things by halves. As if taking the mother crystal for his own wasn't enough. He had to build his castle on it. चलो हेल्थ तो फुल हो गई कम से कम। अब यहाँ पे टाइटन निकलेगा और पूरा का पूरा क्रिस्टल तोड़ देगा। ये क्रिस्टल जैसे लग रहा ही नहीं है यार, बाकी सारे जो मॉडल क्रिस्टल्स थे उसमें पूरा का पूरा क्रिस्टल से भरा हुआ था, ऑलमोस्ट पूरा एरिया, एटलीस्ट ऊपर का भाग। इसमें नीचे क्रिस्टल्स हैं यहाँ पे, हाँ ऊपर का भाग पूरा रेत वो सब है, चट्टान, जो भी बोलना चाहता हूँ। Let the trial begin. With me, Torgal. जा इतना आसानी से नहीं मारा। बाप रे बाप, ये वाले हमने 2 बार इसको मुझे मार दिया। पीछे से मार रहा था मैं उसे आराम से। ओ मैं इसे आसानी से उसमें बचता हूँ। बचे तीसरी बार इसने मुझे इससे मारा है। हाँ जाओ। और अब ये पॉज हो गया इसका, अगर बात करो ना। 36,805 सबसे ज्यादा डैमेज आता है। पहली बार में इसके पीछे जाओ, इसके पीछे जाओ। मैं डॉज किया था यार। और इसे नीचे लाओ और 30 बार करना है इसमें कम से कम। करना होगा ये वाला इस्तेमाल। इतने आसानी से नहीं। ये स्टन हो गया। इस बार इससे मारो। जाओ। 25,246 बुरा नहीं आता है।
दूर जाना होगा यार। शिट। मैं आसानी से मारने दूंगा मैं। Oh shit. इसका लगभग कर दिया मैंने, थोड़ा थोड़ा। हाँ। जा जा। मारते जाओ मारते जाओ, ये मर जाएगा मर जाएगा। तो मुझे मारेगा शायद, अब ऐसे ही खेलता रहता हूँ। पहले स्टन होगा या फिर ये मरेगा पहले? अलविदा। 1011 चाहिए था सिर्फ इसके लिए। और ये मुझे मिल गया फाइनली। Increases thunderstorm damage by 10%. Yes. Seems we're expected. So this is the power of Muthos. Did the orcs do this too? पोशन जो एक इस्तेमाल की, ओह नहीं दो इस्तेमाल किए थे मैंने पोशन। दूसरा मेरे हिसाब से हाई पोशन होगा जो अपने आप इस्तेमाल हो जाएगा। अच्छा हुआ यहाँ पे आया मैं, इस संदूक वरना मुझसे छूट जाता। सही में more of them. मारो। कहाँ जा रहा है? एक और पोशन दे दे यार ये। स्टील सिल्क किसे चाहिए? मुझे एक पोशन चाहिए ताकि फुल पोशन के साथ जाऊं मैं। हेल्थ तो फुल है नहीं। What the hell is going on? Are these things here for me? Or for him? एक संदूक है यहाँ पे। खोलो 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 खोलो। Some opponents will use the ability Bravery to invigorate nearby allies, enhancing their performance in battle. Look for the Thike icon and defeat this target quickly or is taking extra damage. Oh shit. कहाँ गया वो? हाल में क्या? तो वो इस्तेमाल करना चाहता? मैं ये इस्तेमाल करूँगा।
इतना आसानी से नहीं। ओह ये इसे लगो मार दो जल्दी से। हाँ नहीं कर पाया। कुछ भी करने से पहले अभी मैं करूँगा मैप नहीं माफ करना एबिलिटीज जजमेंट बोल्ट और फिर 3 2 ना इसे रखता हूँ और इसकी जगह लगाता हूँ जजमेंट बोल्ट और फिर डिफेंस इसको नहीं निकाल सकता राउच डैमेज। ओ इसकी वजह से वो पूरा क्या बोलते हैं आग वाला हो रहा था। इसे भी नहीं निकाल सकता। एक मिनट मैंने क्या डाला अभी जजमेंट बोल्ट अंडर स्ट्रॉन्ग। एक मिनट रुकना लाइटनिंग रॉड क्या है अब और ये वाला है अपग्रेड इसे कर भी नहीं सकता। दिमाग में क्या यस इसको इस्तेमाल नहीं करता हूँ इसको इस्तेमाल नहीं करता हूँ और फिर रुक्स गैम्बिट को इस्तेमाल नहीं करता हूँ। वैसे सीखा भी नहीं है के जगह इसके लिए करता हूँ अब नेक्स्ट। एक मिनट इसका क्यों नहीं आया है अब तक। ओह एक बार में 3 ही रख सकता हूँ इसलिए उसका नहीं आया। ठीक है ये भी याद रखना होगा मुझे। मैं क्या इसका मैंने अभी चेंज किया तो अभी के लिए यही रखता हूँ। टाइटन अगली बार चेंज कर दूंगा मैं। First orcs, now these nightmares. Is this your doing, Ultima? सब कुछ फुल है। पोशन हाई पोशन स्टोन टॉनिक सब कुछ रेडी बॉस से लड़ने के लिए। उससे पहले यहाँ पे किसी बड़े वाले से लड़ना होगा फिर। Oh shit! नहीं। मार। नहीं। Oh shit! अब बस ये बच गया। मार इसे थोड़ा मुझे हील कर दे। जा यार हील और अब चला और इसके साथ माना और एक बंद हो गया। मारो और इससे फिर से ये टाइगर का बात रुक जाएगा। ये काफी ज्यादा डैमेज किया मैंने इस बार लगभग 40 होगा। ओह नाइस।
ये लगभग मर गया। मैंने कोई भी पोशन इस्तेमाल नहीं किया, बहुत अच्छे है। भी उतनी ज़्यादा कम नहीं भी, ये हील बल्कि कर दे। लगता है सिर्फ और सिर्फ कॉम्बैट में हील करता है ये। क्या? ये कहाँ जाना है? अगर इस तरफ नहीं तो ओ ओ ओ ओ यहाँ पे? यस। You've been busy, Kupka. But where did you go? The heart. He's in the sanctuary. I can feel it. Come on, Toggle. The favor of earth. मेरे हिसाब से यहाँ बागल से जाना होगा यहाँ पे, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं है। यस। Insufficient potion inventory space. ये पोशन का वो बढ़ाने के लिए मुझे कोई चाहिए यार, साइड क्वेस्ट कहाँ मिलेगा पता नहीं। पोशन इतने देर है, यहाँ पे फाइनल बॉस होगा अब। मैं फाइनल बॉस नहीं, टाइटन। ओह नहीं, इतनी जल्दी नहीं। द इनर सैंक्टम, ड्रेक्स फैंग। Just what I needed. Oh, नहीं इतना। अबे यार। मुझ पे हमला कर, मैं पैरी करना चाहता हूँ। धीरे होगा तो कैसे मारेगा? एक मेरे टॉर्गल ने लगभग मार ही दिया था, इसलिए मुझे आखिरी शॉट लेना पड़ा। अगर तेरे मारने का इंतजार करता तो टॉर्गल तुझे मार देता, जबकि मैं तुझे मारना चाहता था, इसलिए मैं रुक नहीं पाया, मुझे एक और मौका नहीं दे पाया। My everything. I've missed you so much. Kuka! I swear to you, my love, we will never be parted again. What's wrong with him? You got away
away from her! Benedicta! I'll kill you, Roswell! Oh shit, he's priming. No, not now. Come on. Find him. You've done this before. You can do it again. Let the flames burn within you. No. Let them burn without. Come to me, Ifrit! ये वाला बहुत सही लगा था यार ट्रेलर में. टाइटल मतलब सही का टाइटल. अबे यार प्रिजियन काउंट कैरी क्यों नहीं आ रहा? प्रिजियन डॉल फॉल. ये रहा ना. ये हुआ ना. यार इतना आसानी से निकलने को मैं जाओ. तू उधर माते रहे, मैं तेरे पीछे माते रहूँगा. शिट. अरे यार मैं प्रिजियन काउंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ. ये हुआ ना प्रिजियन डॉज ऑफ ये प्रिजियन डॉज. एक और वॉइस बताए. कितने बात करते जाएगा यार भाई. मरने वाला है तू. कितना भी डॉज करने की कोशिश कर रहा है, मरने वाला है. टैगर ये हुआ ना.
1000 ships. ज़्यादा नहीं है सिर्फ तो। Good. क्या करना है मुझे? मैं कुछ नहीं कर सकता अभी। Nice trick. But if you can do it, then so could I! Yeah. Don't stop. क्या करना है इसका? Clive has learned the ability Brimstone from Titan. Hold and release. Square plus R1 to emit a violent explosion. Hold. Square plus R1 longer to increase explosion size and strength. Press without triggering the explosion. Ifrit is invulnerable to damage while charging Brimstone. Suffering an attack, however, will automatically trigger the explosion. Okay? Let's give this a try. Aja. Oh. अरे नहीं डॉज और प्रिजन का एकदम से जा एक या Boy, something like भागो भागो Oh, ठीक करके एक स्लैम प्रिसीजन ब्रिमस्टोन मुझे नहीं लगा वो प्रिसीजन था मैं ये लोग के थोड़ा हाथ था जब मैंने दिया सही बोलो तो इसके लिए बचा के रखना चाहिए था और voice of the land डॉज किया था यार मैंने कहाँ भागेगा तू मरने वाला है बहुत जल्दी मैंने डॉज कर दिया हवा में कूदा उससे पकड़ लिया सीधे टाइटन ने और नीचे पटक दिया उन्हें आकाशिक होने वाला है आकाशिक टाइटन
ओके बचना है ये हम लोग से। नहीं ओ डॉज करना है, डॉज करते रहो, उसके पास पहुंचना, डॉज करते रहो। ओके अभी के लिए कोई और दिक्कत नहीं आते है। थैंक यू फॉर हीलिंग यार। ओके इनको कैसे बचना है? कुछ नहीं करना, ये कठिन है। ओके अब करना है मुझे। एक बार लगा मुझे इस पिस्तौल से। टाइटन लॉस। यार फ्रीट ऑलरेडी इतना छोटा लग रहा है इसके सामने, और फ्रीट इतना बड़ा होता है। ओह डैम, ओह दैट्स गुड। Oh. थोड़ा और मारना चाहता मैं यार। ये तो मार भी नहीं पाया इस बार। ओह यार मुझे डॉज करके दूसरी बात इसका मैं नहीं कर पाया डॉज। तो अभी के लिए मतलब ये चार्ज शॉट ही करना होगा फिर। आ जाओ चार उसने पूरा ये तोड़ दिया। यार ओह डैगर हो गया इसका। एक होता है यार वो हाँ ये वाला फाइनली बहुत ठीक है।
यार बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ मैं। 535,000 का डैमेज, उससे ज़्यादा कर सकता था यार, वो कॉम्बो ठीक तरीके से कर पाता। और फिर से ये शुरू हो गया। भागते रहो भागते रहो। जीटिए टाइटल लॉस के सामने इस वीक। Oh shit. जा जा एक और बात नहीं मार पाया यार। मार दिया। जा टैगा लगभग हो गया ये। ओह यहाँ पे दिखा रहे कहाँ कहाँ गिरेंगे वो। अरे यार ये वाला एक बार मैं बचना चाहूंगा यार, एक बार। स्टैगर करना है ये है। आजा 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 आजा, मैं तैयार हूँ पहले। बहुत तक 82 से 82 होता है। और तीसरी युद्ध के मैदान में पहुंच गए। वो बचा किसी तरह, मैं उसका भी नहीं कर रहा था उसके लिए। Oh shit. Jump. हाँ। एक और नहीं मार पाया यार फिर से। मैं एक और बार मारना चाहता था उसे। यार नहीं मार पाया, क्योंकि वो जंग के मैदान में कुछ कर दिया। बस ये और है ना यार। हाँ और जा शॉट मारते जाओ और कुछ कर नहीं सकता।
1000 के ऊपर 730 बल्कि। ये स्ट्रेंथ चेक है, स्ट्रेंथ चेक जाता था। दोनों हाथ तोड़ दिए इसके। एक ऑफ स्ट्रेंथ चेक। ये यहाँ पे मुझे लगा था यहाँ पे कुछ होगा। इसके साथ कैसे बचना है? क्या करना है इसका? समझ नहीं आ रहा। ओह अबे यार, ये एल के साथ ये रहा। इसको मारना है। ये भी गया। अच्छा हुआ हीलिंग है, वरना हमें ये वाला शायद ठीक से कर भी नहीं पाता। इतने समय से ऐसा वाला आया नहीं कि मैं भूल ही गए ये वाले गेम प्ले के बारे में। ठीक से समझ नहीं आ रहा सही बोलो तो, कब मुझसे हमला कर रहा है और कब क्या कर रहा है। मेरे पास भी नहीं है इसको। कितना नीचे जाने को होगा यार, मालूम है गेम से उतना ज़्यादा मेरा होता है ये जितना ये फाइट कर चलेगा। टाइटन ऑफ कोर्स इसके पास बहुत ज़्यादा ताकत होगी।
जाना चाहिए क्या बीच में? Oh shit! Dodge. Ping. अब मेरी कल कूदेगा यार। अल्फा हेल्प भी नहीं किया मैंने अब तक इसको। और ऐसे ही मारते रहो। थोड़ा हील कर दूंगा अगर थोड़ा और मेरा हेल्थ कम हुआ तो। हो गया। तीन सौ सत्तर से दूर है तो ये कर देता हूँ। dodge करेगा फिर भी dodge था। मैं ज़्यादा कम कर दिया मैंने इसका strike. R1 Sensitive. Anything? मैं फेल हुआ क्या? गलत बटन दबाया। मुझे लगा एक और सेंचेक हो गया। ये डॉज Titan Lane. एक और लेवल बढ़ गया। Earth and Fury used in crafting. Semi-priming requires the channeling and corporeal manifestation of ये कुछ नया नहीं है शायद।
तीसरा मदर क्रिस्टल फोड़ दिया हमने। 2 और बचे हैं अभी। पूरा पत्थर बन गया ये तो। Is that you, Ultima? What do you want? Your soul is tainted with worthless human will, yet your thirst for power remains undiminished. With every sip you take, you grow in strength, and soon you shall achieve perfection. I don't know what you're talking about. You will accept us, Mythos. It is inevitable. You were created for this purpose, and you shall serve it. Never! Fight it, Clive! Don't let him in! Consciousness. We see now. Human will is so insubstantial it cannot exist in isolation. You mitigate its weakness by interweaving it with your consciousness. We believed we had merely to purge you of your will to claim our vessel. It appears we first have to sever every thread of the consciousness that supports it. No matter. The time to build a new world is not yet upon us. We will contemplate. Thank you, Joshua. भाई अल्टीमा क्या है, इसको क्या बनाया है? One can no more command the power of ether by drowning in its flood than one can constrain the tides by standing in the sea. I had thought Hugo wiser than this, but it seems his head was full of rocks after all. ये कौन बंदा है यार? अल्टीमा के साथ है या इसके खुद के ही हैं? Titan was strong. Your Majesty. Okay. But Mythos is stronger. For 5 years, that man lived only for revenge. Clinging fast to a fiction, even as it swept him into the abyss. One cannot change one's nature through force of will alone. Only the Almighty can do that. ये फाइनल विलन से लगता है ओडेन। Hugo Kupka, the man who gave his life for a woman's head. A fool like all the rest. The
that the death of a mother crystal should be so beautiful. Holy Order of the Knights Dragoon, north of the Isles of Ark. Some medicine, my lord? I have salves, potions, anything you need. Stop bothering me, urchin, or you'll feel the back of my hand. You must consider your health, my prince. If a show of force is needed to keep the Dalmex at bay, you may trust in your dragoons. I beg you to call on Bahamut only as a last resort. His strength comes at too great a cost. The Empire agreed to an armistice with the Republic, and yet the Emperor still plots its ruin. For now, the Dalmex suspect nothing, and as long as I can hold their gaze, war need not be inevitable. But more than that, Bahamut is the champion of the Empire. When our people look to the heavens, the sight of him gives them hope. Forgive me, Terence. Would that you were my master. But alas. I will always be your loyal servant. Should the Council's brazen maneuvering prompt the Republic to tear up their own treaty and launch a new assault, our soldiers would advance to meet them, cutting across the Central Isles, but not in time to prevent their forces from breaching the southern defenses and storming Twinside. And so the capital would become a battlefield. Thousands of innocents would die. I cannot allow that to happen. There is one small mercy, at least. You will not be forced to do battle with Titan. Would that I could avoid doing battle at all. 1,000 pardons, Your Highness. What is it? Olivier has been made Emperor. What is the meaning of this? My father's orders. What were they? Quickly! Yes, Your Highness. His Radiance requests that Your Highness maintain position here and... Gah! Terence. Yes, my prince. I must go to the palace. I'll ready your steed. What is it now? Forgive the intrusion, Your Highness. I know you. At ease. We stand in the presence of the Phoenix. You wouldn't want to get your fingers burned. I hope I'm not interrupting.
Not at all. Though I admit, I did not expect such a distinguished guest. How many years has it been since the Remembrance ceremony? 20? I thought you long dead. Do I address a ghost? Many have told me that I look like one. But no. I'm alive. Just. Prince Dion of the House Lesage, I have a tale to tell you. ये तोड़ दिया हमने ये मदर क्रिस्टल भी। मैं सोच रहा था वो कब मिलेगा जोशुआ इससे। फाइनली मिल गया। और हमारी माँ ने कैसे कन्विंस किया एम्परर को, ओलिवियर को एम्परर बनाने में, आउट ऑफ द शैडो। I'd better give Otto the good news. ये हमारी माँ भी क्या अल्टीमा के साथ है क्या? अल्टीमा की ताकत इस्तेमाल कर रही है। अल्टीमा का ताकत इस्तेमाल करके क्या बोलते हैं, वो एम्परर को ब्रेन वॉश कर दिया क्या कि तुम स्टेप डाउन कर दो, मेरे बेटे को एम्परर बना दो। एक ये रीडिंग टेबल में भी है और एक वो कम से कम एक आ गया होगा बाउंटी बोर्ड में या हंट बोर्ड, जो भी बोलना You have चाहता हूं। told me the gentleman who visited earlier, the one with the loud voice, was your uncle. I did think there was a resemblance. Something in the eyes. अभी के लिए जाके We're उठो। seeing troops amassing at every border crossing. Well, no surprises there. Was the same after Drake's breath. फिर दो और बचे हैं अभी, इनके नाम याद नहीं पर वही है। एक ड्रेक्स हेड है शायद किसी एक का नाम, या ड्रेक्स फैंग। ड्रेक्स फैंग को अभी तोड़ा हमने एक्चुअली। ड्रेक्स टेल, ड्रेक्स हेड, पता नहीं जो भी है यार। Clive, you're back. I am. And with glad tidings for once. Hugo Kupka is no more. Well, I'll be. All of our comrades who lost their lives back at Sid's place be smiling down at you right now. We had a stolus from Lubor saying Drake's fang had fallen. I expect that was your doing as well, was it? It's a long story. One for the history books, I'll bet. Welcome home, Clive. It's good to be back. You look better. I feel it. Which means I'm coming on your next little adventure. You're not leaving me behind again. Wouldn't dream of it. Otto, any word on the Royalist movement since I've been away? Shouldn't you be putting your feet up? If you really want to know, go and have a word with Vivian. Thank you. I will. No. सबसे पहले जाके मैं वो क्या आइटम मिला था यार? What became of Kupka? सेलेक्टेड टाइट नहीं, Why haven't we heard anything? जो भी हो, वो आखिरी लेजेंडरी वाला गियर बनाता हूँ। इसके रेसिपी के लिए एक आइटम का ढूंढ रहा था मैं। What do you want? स्कारलेटाइट। Yes, बनाओ। Not bad, if I do say so myself. ये हुई ना बात। Anything else? If the state of our coffers is anything to go by, I'd say we found ourselves a wealthy patron or two.
A wealthy patron. Oh, not two. हमारे अंकल. देखिए किसके. Desert Alliance. With the second, I trust you will forgive me for putting you and your dear uncle to the test. I am confident that a man of your position can understand the importance of earning one's trust, especially in times like these. For what it is worth, you now have earned mine, and I can assure you that it shall not be easily relinquished. May this be the start of a fruitful relationship. Ruzena. So yeah. दो मिनट देना, मैं 2 मिनट में आता हूँ. वापस आ गया. ओके, अब पहले विवियन से बात करने से पहले इसका क्या नया खुला. While accessing the Arex Stone, Clive can replay any of the main scenario's major battle sequence. This mode can be used to revisit cutscenes, collect forgotten items, earn XP and AP, or retry missed achievement. Okay.
In arcade mode, you can re-challenge previously completed stages and be scored on your performance. Gear and level restrictions are applied. Points are awarded for performance in battles. The more complex your battle techniques, the higher your score. The higher your score, the better your overall rating. Successfully performed battle techniques are displayed in real time on the right hand. The technique scoring is as follows. Rainbow. White, blue, cyan. Oh, green? Cyan से ज़्यादा अच्छा है green. सही में? Rainbow मेरा कभी भी नहीं मिला है. कभी भी नहीं. At least मैंने कभी ध्यान नहीं दिया. While level consumable items and gear are predetermined for each stage, iconic abilities can be customized to one's liking. Also, equipment restrictions do not apply to accessories. ये सबसे पहला बैटल था क्या? आसान वाला ये बेनेडिक्टा, गरुड़ा, पहला ड्रैगून हमारे खुद के खिलाफ. ये पता नहीं, इसका नाम नहीं मालूम मुझे. अल्टीमा नहीं है. कोल नाम नहीं मालूम, याद नहीं. ह्यूगो और टाइटन. इसका बाद में कभी करूँगा. एक्सपी वो सब अर्न करने के लिए ये. Ivan's newest dish is a... The sun hath topped the mountain, the dawn hath kissed the sky. It welcome to the morning and fears of night. Goodbye. बुरा नहीं था. बीच में थोड़ा बहुत उसकी याद आई. क्या बोलते हैं, फाइनल फैंटेसी 14 A Realm Reborn का जो गाना है. नाम बाबा भूल जाता हूँ उसका. We're seeing troops amassing at every border. If you're desperate to know more about Waloed, Vivian's your girl. But if I were you, I'd be heading straight to my bed. Not bad for a boy from the Imperial Barracks, eh? It's good to have you back. I was worried. चलो देखते हैं कितने और बाउंटी आए. Did I tell you about the time I toured the Northern Territories? I trust you wrapped up warm. I did no such thing, Kupo. We Mughals don't feel the cold thanks to our exceptionally fluffy fur. You humans are not the only animals up there who feel the need to dress up in the furs of those fluffier than yourself, Cooper. In fact, that's precisely why I ended up cutting my tour short, Cooper. My kindly greetings to the locals were met with a volley of snowballs. And I make a much better hero than I do a hat, Cooper. Volley of snowballs नहीं था, कुछ और ही था. Did you know that with every forward step you take, Cooper, every crystal cracked, every friend made, every enemy fell, the curse breakers are expanding their operations too. Which means more bearers being freed and more slavers being punished. But it also means more billets for the board, Cooper. Okay. Oh, damn. S tier. Oh, shit. पहले C वाले करता हूँ. Grimalkin. Just off the sickle, the road that leads from Dalimil to the Jaw lies a dead-end canyon into which travelers moving at night are wont to stray, providing a constant supply of sustenance for a feline most foul. With the daytime deserts heat ever its own threat to life, and merchants ever mindful not to waste their last shards of crystal on the lighting of lamps, only the monster's demise might save them. The Cattery, दाल में किया. ये क्या है? From Dalimil to the Jaw, एक dead-end canyon. ठीक है. Soul Stingers. A swarm of vicious wildkin has of late made its nest near an abandoned village in the fields of Korova. And as the hive has grown, so too has its hunger. Already, the stripped corpses of great beasts have been sighted in its vicinity. Should the wildkin be left to their own devices, the nearby settlement shall surely be reduced to naught but a collection of bleached bones within a 12 moon. Empty hovel, tahal mein kiya. Near an abandoned village in the fields of Korova. ये तो ठीक है. Among Republican merchants, reports abound of caravans being crushed by a black boulder.
A creature indeterminate in nature but quite decided in size, strength, and spite. He or she who took it upon themselves to seek out and slay this black mass would earn the eternal gratitude not only of the desert traders but of the curse breakers who risk life and limb with every trip through the Velcroy. The Velcroy desert में ना ठीक है, ये वाला एक abandoned village में empty hall में पील सोकोरोवा, और ये ठीक है दालमेकिया से जॉ के बीच में एक वो है, और ये है वेल्क्रॉय डेजर्ट। ये दोनों बाद में करूँगा यार, ए और एस रैंक वाले। आइटम खरीद लेता हूँ, उसके वजह से मैं 2 बार मरा हूँ क्योंकि मैं ठीक से नहीं किया था। अगर वो लेके गया होता फुल क्या बोलते हैं पोशंस वो सब, तो पहली बार में ही वो प्लान प्रिंस को मार देता मैं। And what can I do for you? पोशन फुल है, एलिक्सर एक और ले लेता हूँ। It'd better I'll be here. प्लैटिनम सोर्ड, ओह शिट, सेल करना है मुझे। यस, कोरल सोर्ड सेल करो, I reckon I can ये find भी the सेल guy. कर दो, इनविक्टस भी सेल कर दो। I'll be thankful you got that much. You got out else? ये सब I'll be सेल करो। thankful you got that much. You got out else? Sell, you do not have any Finished, valuables. are ठीक you? है, अब चलते हैं उसी ग्रेड के जो 2 जो हैं, द जॉ और डैम और जॉ के बीच में ना द सिकल, द फील्ड्स ऑफ कोरोवा, एक यहाँ पे है और एक मुझे लगता है यहाँ पे है। यहाँ पे ही होगा वो एक सी वाला। बी वाला कहाँ था यार? बी वाला यहाँ पे फील्ड्स ऑफ कोरोवा में। गिल्डेड पाथ नहीं, एक अबैंडन्ड विलेज में कहीं पे था। अबैंडन्ड बेड, काफी और जगह हैं जहाँ पे किया नहीं हूँ मैं। क्या पढ़ना होगा एग्जैक्टली कहाँ पे था वो अबैंडन्ड विलेज वाला, वो जो स्वाम है। देखे तो जरा, ये वेल्क्रॉय डेजर्ट और फील्ड्स ऑफ कोरोवा में ही है। अबैंडन्ड विलेज, फील्ड्स ऑफ कोरोवा, ये इसको ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। वेल्क्रॉय डेजर्ट वाला जो बंदा है, इधर पता नहीं कितना समय लगेगा। मैं क्या इसके साथ ही शुरू कर देता हूँ। मर्चेंट्स का जो पाथवे है ना उसमें ही कहीं होगा क्योंकि वही ज़्यादातर बात कर रहे थे। Ready, girl? Run like the wind. वो मर्चेंट के रास्ते में कहाँ पे दिखेगा? हेल डाइवर नहीं, Dumb vultures, preying on the trade caravans. ठीक है मार देता You've हूँ। picked the wrong target. ओह बिल्कुल नहीं। अलविदा। ओह कहाँ पे मैं मारूंगा इसे। यार इधर कहीं पे हो सकता है पर इसके पास होगा मेरे हिसाब से, यहाँ पर ही कहीं।
वॉल्क्रॉय डेजर्ट में पता नहीं कहाँ पे होगा, बहुत ज़्यादा जगह है, इतना बड़ा जगह है पर नहीं। ये मर्चेंट्स बोल रहे हैं ना, तो मर्चेंट्स का तो यही है ट्रेड रूट, अनलेस ये इस तरफ जाता हो सीधे सामने। हाँ एक जा रहा है, या फिर नहीं। द नॉर्थन वेलक्रॉय डेजर्ट, वेलक्रॉय डेजर्ट ही बोला था यार, नॉर्थन वेलक्रॉय डेजर्ट नहीं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पर ही होगा, ऑलरेडी ये इतना बड़ा है। ओएसिस के पास शायद, सदर्न वेलक्रॉय डेजर्ट है वो। ना नो ऑलराइट, मैं इनसे नहीं लड़ने वाला। ये है लगता है। नो ये भी नहीं है। ये कहाँ पे है? उस तरफ ही है लगता है। प्लीज यहाँ पे हो यार। बाकी दो तो ज़्यादा अच्छा आइडिया है कहाँ पे होंगे। मर्चेंट के पाथ में होगा, यहाँ पर मर्चेंट का पाथ कुछ दिख रहा ही नहीं है मुझे। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे होगा। ये ठीक नहीं जा रहा, इस रैंक वाला तो बहुत परेशान करेगा। यस ये रहा, एडमेंटाइन पैस्टिटो कालन, ठीक है। Well, Clive. Nice. Looks like you're gonna need an even bigger sword. Oh shit. Nice try. Oh नहीं। हाँ वापस जा। अरे यार सही में वो नहीं था परफेक्ट काउंटर। ओह जा मारते जाओ। इसका लगभग हो गया। ओह शिट, हाँ इसका कितना कर सकता, आधा कम से कम। हाँ टू स्लो। यार सही में जा मुझे हील कर देना चाहिए था इसने कर। इतना समय था मेरे पास। एक बार ये हीलिंग रुक जाए फिर एक और शुरू कर सकता हूँ। मार 15, 20, 25, 30 और ये रुक गया। हाँ वो एकदम एंड में फंस जाएगा था। 40,788
Oh shit. Oh! भागो 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 भागो। ना ना ना। नहीं। Heal. Thanks, boy. मुझे लगा मैंने डॉज कर दिया था समझ। जा 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 जा। हाँ, ये हो गया ना बात। इतना आसानी से नहीं। ओह शिट। ये अब मेरी तरफ आएगा। नहीं करना चाहिए था मुझे। वो मेरी गलती थी। ओके। हाँ। नीचे आजा और फिर गाउच हमला करो। हाँ। ये सेकंड बार को भी आता करने के लिए कम से कम। नहीं यार। नहीं नहीं सुहा ये। मैं आसानी से नहीं मारने दूंगा। आजा आजा आजा। नहीं क्या कर रहा था यार, मैं अभी भूल गया क्या। हाँ जल्दी 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 जल्दी। जा 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 जा। नहीं थोड़ा देर हो गया यार बाद में। चलो मर गया फिर भी। काला टाइट। It should have stayed in its shell. ओह ये ऑलरेडी ले लिया मैंने, पता नहीं कब लिया ये वाला। चलो इसे मार दिया और अब एक यहाँ पे है और फिर एक और यहाँ फीट्स ऑफ कोरोवा में, पर वो दोनों सी ग्रेड वाले हैं तो उनके साथ कोई परेशानी नहीं होगी। I take it Drake's Fang was your doing, Sid. You really are quite the outlaw. It's only a matter of time before the people learn of this and seek to apportion blame. Lie low is my advice. Okay, ये कुछ बोलेगा उसके बारे में? Master Lubor says Drake's... I hear you've been busy. That was your doing, was it not? Rumors of the Fang's destruction have already reached the long ears of the desert here, and they will soon be on the lips of every man, woman and child in Dalimil. Though I doubt they will receive the news quite so cheerfully as I did. This town owed much of its prosperity and protection to the Fang, and many will feel that now it has left us, so too must they. As for me... I know what it is to live without crystals, without wealth. It was not an easy life, but I survived it. And Dalimil has plenty of blessings even without the Mother Crystal. Its healing waters, its proud people. What need have we for magic? It is but a convenience, a crutch. If the people need a new crutch to lean on, perhaps they ought to look to one another. Stay safe out there. The finest fabric! Take a sniff, good sir. Fresh bread, warm from the oven. Oh, where did all the men of the rock go? Plates and pots! Bowls Are you looking for something in particular?
An excellent choice. Good girl. यार मैंने लगा था मैंने अनम्यूट कर दिया था अपने आप को। मैं बोल रहा था इतने छोटे वाले बंदे के खिलाफ लड़ेंगे। ओह एक मिनट, ये नहीं है शायद। हाँ ये डैलमिल और जॉ के बीच में बोला था कुछ। ये है क्या यहाँ पे? वो 3 है क्योंकि वहां पे और मुझे एक मिनट, वो स्वाम था ना उसका? नहीं स्वाम तो वो अबैंडन विलेज में है। अबे फिर भी जाके देख लेता हूँ एक बार। Be safe. Farewell. Stay down. लग रहा नहीं है यहाँ पे कुछ है। छोटे वाले बंदे हैं यहाँ पे बस। नीचे जा। जा। नॉप, ये डेफिनेटली नहीं है। कैनियन कुछ था यार। कैनियन बिटवीन Dalamil and the jaw. ये नहीं है तो फिर इस साइड में जाना होगा क्या? इधर कहीं है क्या? ओह एक मिनट, इसे कैनियन बोलते हैं ना शायद। इधर कहीं होगा। उम्मीद तो वही है कम से कम कि यहाँ पर कहीं होगा। The mother crystal. The mines. It's all gone. Lord Kupka's castle too. Do you think he made it out alive? Oh shit. वो एस ग्रेड वाला है क्या? Yes, definitely. Straight home now. ये एस ग्रेड वाला बंदा है लगता है। नहीं B. A grade. The 9 of knives. My blade yet hungers, and so do I. Come, let us feast on your flesh. Oh, your feasting days are over. क्या कर रहा हूँ पता नहीं। Oh shit! नहीं ओह आजा ठीक है। Holy shit! Nice try. Too slow. और ओके इसको थोड़ा बहुत किया मैंने ना। आजा 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 जा जा जा
ओके 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 ये मुश्किल डेफिनेटली है हाँ ये यार Well done, Togo. Togo, kill! Oh shit 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 बिल्कुल नहीं ये लगभग हो गया हाँ गलत वाला बटन दबाया मुझे पहले मैंने गलत वाला बटन दबाया यार ओह और यहाँ पे आ जा हाँ शिट और ये स्टन हो गया शिट कितना ज्यादा डैमेज किया मैंने 40,600 ओह शिट शिट कापरे 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 ओह नहीं नहीं और ये आजा ओके मालूम है क्या इसको इस्तेमाल करूंगा मैं अभी हाँ ये हुई ना बात ओ लगभग कर दिया यार भागो 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 हाँ गलत बटन फिर से बाबा भूल जाता हूँ क्यों भूल जा रहा हूँ मैं shit, shit, shit. All yours, Togo. Nice try. Oh. Shit. आजा पास आजा नहीं नहीं यार और मारो ओह शिट इसको बस एक बार स्टैगर कर दो तो काफी ज्यादा डैमेज करो हाँ और अब स्टैगर हो गया 25 मारा 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 ये मरा
इसको ढूंढ रहा नहीं था पर ये मिल गया। लेवल अप 34। Those who kill for sport deserve no better. इसके बारे में पढ़ लूंगा बाद में। डेजर्ट रोज। अब मुझे वापस जाना होगा यार उसकी तरफ। क्या बोलते हैं, डालमिया के पास वापस जाना होगा। मेरे पास कोई भी हीलिंग नहीं है और ये कोई भी मार्क से लड़ने से पहले मैं हील करना चाहता हूँ। I mean, हील है पर उतना नहीं है। Oh, where did all the men of the rock go? Probably ran out of gil, just like us. इतने गिल जो मिल रहे थे वो बचाते तो ऐसा नहीं होता। दोनों के लिए, इनके लिए, कोटिसान के लिए भी और वो जो बंदे हैं मैन ऑफ द रॉक। Anything I can interest you in? An excellent choice. स्ट्रेंथ टॉनिक भी इस्तेमाल करना चाहिए। वो ए ग्रेड था जिसने लगभग मुझे मार दिया था। अब मारा नहीं, फिर भी मैंने उसे एक बार में मार दिया और वो फ्लैन प्रिंस ने 2 बार मुझे मारा। अब फिर से हमेशा कहूँगा वो मेरी गलती है। अगर मेरे पास शुरुआत से वो 4 हीलिंग पोशन होते ना, मैं फर्स्ट टाइम में उसे मार देता आसानी से। I mean, उसकी हेल्थ भी काफ़ी कम थी सही बोलूँ तो वो फ्लैन की। और हीलिंग के साथ मैं उसे स्टैगर करके पूरे 30,000 या जितने भी उसकी एचपी थी वो कम कर देता, जैसे इसकी की मैंने एंड में। मेरे पास उस समय भले ही वो नहीं था 2 अल्टीमेट, सिर्फ एक ही अल्टीमेट था फिनिक्स का, तो फिर भी मैं कर लेता किस तरह। ओके, यहाँ पे अब देखते हैं। Run like the wind. शायद अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो मतलब वो उसी की तरफ जाना होगा जहाँ पे वो स्वाम का भी है। यप। Time to fight. Not time to fight. Time to hunt. पता नहीं ये जब ये पिछले वाले से लड़ा था ना, द 9 ऑफ नाइव्स, एस ग्रेड बोल रहा था, बी ग्रेड बोल रहा था, पर ए ग्रेड पता नहीं क्यों नहीं बोला, जबकि मुझे मालूम था वो आखिरी 2 में से किसी एक था। वो 2 में से एक ए था और एस ग्रेड था। एस ग्रेड नहीं तो ए ग्रेड बोल देता मैं। पता नहीं क्यों ए ग्रेड नहीं बोला, दिमाग में बी ग्रेड क्यों आया बोलने के लिए। सिकल ये ही लग रहा है। तुमसे नहीं लड़ना है तो मुझसे दूर रहो। मानना चाहते हो तभी करो मुझ पे हमला। यस, ये एक लड़ाई की जगह भी लग रही है, पर ये नहीं है। वाइल्ड मैक। शायद नहीं, ये भी स्वाम नहीं है यार। एटलीस्ट वो स्वाम नहीं है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। ओ ये ही है। ग्रिमलकिन रैंक सी, उससे ज़्यादा आसान होना चाहिए। 9 ऑफ नाइव्स। Great time for the pack, is it? Let me introduce you to और
shit. और मैं क्या Watch it. भाई ये कब आएगा हमारे पीछे? सही में और ये एक ही था ना और फिर से इनको मार दो इनको आसानी से मार दिया अब वो आएगा अब आएगा And then there was one. इसका अटैक पैटर्न कोल की तरह है गलत टाइम पे ये हो रहा है यार Too slow. और इसे मारते रहो अरे यार मैं पैरी करने की सोच रहा था हाँ ये हो गया ना पैरी ना इतना आसानी से नहीं मारने दूंगा हाँ इतने आसानी से नहीं मारने दूंगा मैंने कहा था अरे यार पैरी मैं पैरी करने की कोशिश कर रहा हूँ यार आसानी से नहीं करने दूंगा जा 308 ना आजा यार मैं इससे पैरी करने के चक्कर में मैं मार खा रहा हूँ ये मर जाएगा अगली बार जब ये अगर होगा तो ओह शिट शायद नहीं होगा ये यस होगा मर गया यार Grimalkin hide. Grimalkins have developed spots on their skins which render them nigh invisible as they prowl the arid savannas of southern storms. Said spots provide considerably less camouflage when prowling elsewhere, however, obtained by defeating Grimalkin. What? That wasn't too bad, was it, Torgal?
मैं शायद कर सकता हूँ वो स्वॉर्म को। इतने हीलिंग पोशन के साथ। मैंने स्टोन स्किन टॉनिक भी इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ये सी ग्रेड था। मुझे लगा कोई प्रॉब्लम होगी मुझे, और सही बोलूँ तो उतनी प्रॉब्लम नहीं है। मैं जो एक एटलीस्ट पोशन जो इस्तेमाल किया वो इसलिए मेरे खुद की गलती से फिर से, क्योंकि मैं पैरी करने की कोशिश कर रहा था। प्रिसीजन डॉज करना ज़्यादा अच्छा आसान है पैरी करने से। टाइमिंग स्पेशली करना। यहाँ पे शायद मिल जाए मुझे, नहीं गिलबर्ग आउट की फिल्म मिले, पर कोई पोशन नहीं भैया। सही बोलूँ तो मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ कि ये बीच में ऐसे जो आइटम्स गिरे रहते हो ना, उनमें से कोई एक पोशन होगा। अभी के लिए तो यहाँ पे मुझे एक अबैंडन विलेज ढूंढना है। वो रहा अबैंडन विलेज। थ्री शार्प फैंग्स, डेफिनेटली वही है। द फील्ड्स ऑफ कोरावा जो भी है उसका नाम। 3 डेजर्ट रोजेस। अनफॉर्चुनेट। तुमसे नहीं लड़ना चाहता मैं सिर्फ यहाँ पे जो सी ग्रेड है स्वॉर्म, उनसे लड़ना चाहता हूँ। No need to ride from here. मैं क्या यहाँ पे कुछ दिखा था मुझे, तुम मुझ पे ठीक है मरो। मैं यार जा। वो भाग गए थे यार। मत अब सब मर गए। आ जाओ, उधर से 2 जो हैं और यहाँ पे 3। ओके, अब इसके अंदर कहाँ पे है वो? ये रहा अबैंडन्ड विलेज। शिट, ये नहीं है। कोई और अबैंडन्ड विलेज है क्या? वो भी एक अबैंडन विलेज है क्या उधर? Good girl. क्या है? ओह, एक कोरियल कॉल। पागल नहीं हूँ कि उसके खिलाफ लड़ने जाऊंगा, पर फिर भी कॉल है उधर। No holding back. तेरे लिए नहीं आया हूँ मैं यहाँ पे। भाग जा यहाँ से, मेरे पीछे मत आ। ये है क्या? Straight home now. Soul Stingers. चलो। They don't look happy. जा मारने क्या? चार, 5, 6, 7, 8। Oh! What?
वो ऊपर और ये मरा। मार दे जाओ। और पूरे के एक ही बचा है ना? हाँ। और दो हैं। वहां पर ये रहा। और ये आखिरी वाला भी मर गया। अब बस एक एस ग्रेड वाला बचा है। Peace at last. उससे पहले सोच रहा हूँ ये कोल से लड़ लूँ क्या? मजा आएगा लड़ने में। एक ही कोल से लड़ा हूँ अब तक। मैं क्या, मैं कॉल से लड़ रहा हूँ आगे बढ़ने से पहले। उसे ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। ये पता नहीं किस पे हमला कर दे। ओह शिट। में क्या आइटम्स? एलिक्सर नहीं, स्ट्रेंथ टॉनिक एक इस्तेमाल कर रहा हूँ। नहीं, इतने आसानी से नहीं का। नीचे गिरा दो। हाँ, और आसानी से मैं इसे टाइगर कर दूंगा। हाँ, क्या? हाँ, और जा 43,000। जा। हाँ, इसी का इंतजार कर रहा था। ये मर आया। ओ आजा, अलविदा। कॉल विस्कस, इस कॉल को मारना ही चाहता था मैं, पर अभी के लिए वापस इधर जाना है। और एक मिनट रुकना। तो जो आखिरी जो एस ग्रेड हंट है उसे लेना है, और वो लेने से पहले सब कुछ फुल करो। Why haven't we heard anything? Try to stay calm. I'm sure we'll hear something soon. वो मर गया कुप का, टेंशन मत लो तुम लोग, मार दिया मैंने उसे। And what can I do for you? Going purse weighing you down? You'll not find a better price than that. Yes. It's rubbing me blind, you know.
गोट से भी देख ले क्या बोलते हैं। Come on, Clive. I was hoping you'd be back soon. चलो इससे बात हो गई, अब जाके देखना है वो एस ग्रेड हंट। एस ग्रेड से अच्छा पैसा भी मिलना चाहिए और अच्छा रिनाउन भी। मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी रिनाउन है, सही बोलूँ तो। वो आखिरी जो अवेलेबल नहीं था पहले, वो अब अवेलेबल होगा। Did I ever tell you about the time I took a trip to the island west of Storm? You mean the Iron Kingdom? Is that what you call them, Kupo? In Mughal tongue, we call them the smithies, and the strait that separates them from the mainland, the quench. I was adventuring down the Dalmatian coast when I saw bright lights and black shadows out in the offing, Kupo. As I flew over to take a closer, imagine my disappointment when I learned those lights and shadows weren't busy for just training the landscape wood, but blighted something. Still, from what I have learned of how the local street strangers since Kupo, it was probably the best I didn't get something. यार थोड़ी देर के लिए रुक जा। Dalmatian traders are wont to say a prayer for unwearied travelers journeying from the Dalmil to Drake's Fang. For there lurks a bloodthirsty brigand, one who appears to be more interested in letting the blood of his quarry than he is in any gil or goods he might plunder from their caravans. If the road is to be made safe again, then at least one traveler passing through the place must not flee, but stand and fight. 20,000 और ये 25. Urgent notice to all Cursebreaker due to the discovery of a fallen giant in the Rosarian ruins. We have lately been investigating all the works in the region to be halted with immediate effect, and all members are to proceed no further than the village gate, lest the echo should be awakened by our presence. No further action may be taken without Sid's express permission. The Breaker of Worlds. God damn, इसके लिए मुझे लगता है अभी जाना चाहिए मुझे। थोड़ा और अच्छे वेपन के बाद जाऊँगा मैं। Welcome to the Patron's Whisper. Kuka. I thought that bastard's dead would change things. Not when I close my eyes. I can still hear Jara's voice, and he whispers for us to run, as he calls out to the soldiers to distract them. His words saved us, and I'll never forget that. It's just like he said, words are immortal, and his live on in me. They changed my life, and I wanted to thank him ever since. Only I don't know how. I don't know the right words. I wish you were here. To teach them to me. Your benefactors are a generous lot. Oh god damn. Many claim they wish to change the world, few actually take it upon themselves to do so. You are an inspiration to our art. So, oh yes, definitely. Here you are. Come again. I may have more for you. Not bad for a boy from the Imperial Barracks, eh? रोजारिया में है और गेट्स का मतलब ईस्ट पुल ही होगा, मतलब यहाँ पे कहीं पे है, ईस्ट पुल और डिम के बीच में, यहाँ पे कहीं पे। मोस्ट प्रॉब्ली ये वाला है एंटर करने का जो है। एस्क्रेड अभी नहीं करूँगा मैं। मेरे गेयर से एक बार देख लूँ जरा। एकदम मैक्स है जो कर सकता हूँ अभी। ये अच्छा है, मैं ये रख रहा हूँ। पाउच के जगह अपहीवल नहीं है मेरे पास, लाइटनिंग रॉड नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ। थंडरस्टॉर्म कौन सा है? ये नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ। जजमेंट बोल्ट ये है ना जो मैं कर रहा हूँ। फाइल ड्राइव अगर उसका कोई होता तो मैं शायद डाल देता। डिफेंस थोड़ा कम कर दूं क्या? ये ज़्यादा डैमेज के लिए। इग्निशन का ऑलरेडी बहुत कम है, वो ज़रूरत नहीं है। द ब्रेथ ऑफ फायर। ये लगा देता हूँ। 30 कर दिया मैंने अपने डिफेंस को। और एक और चीज ये चेंज करना है ना मुझे। टाइटन अपहीवल, वाइंड अप और अपहीवल ना। मैंने एक क्यू लगाया है जब ये अभी चेंज किया मैंने। अपहीवल डैमेज बाय 8%, ठीक है। वाइंड अप का कूल डाउन 3 सेकंड कम करता है।
ठीक है, ये एक बार देखते हैं। अभी के लिए बाकी सब जो मैं करना चाहता था कर दिया मैंने। कोई साइड को वो नहीं है, और वो एस क्लास का मैं अभी नहीं करूँगा। तो मैं इनको शुरू करते हैं। Ah, the conquering hero returns. And with hardly a scratch on him. I may have picked up one or two. Well, the fact that you came straight to me instead of visiting our resident Physica suggests that you picked up something more important. A scent. The scent of Waludas. The very same. But whatever plans Kupka was hatching with the Royalists, he took them to his grave. As did his men. Slaughtered by the orcs who'd taken over the Fang. Orcs, Vivian. I've never seen such creatures in Storm before. The Waludas must have ferried them over from Ash, but why? Why work to rescue Kupka only to invade his home, the mother crystal of an allied nation, and let both fall? It makes no sense. Do you know the tale of the blind men and the Adamantus? One can often be led astray by focusing too closely on individual details. One must instead see the bigger picture. And what bigger picture is there than my map? The kingdom of Waloed claims dominion over all of Ash. It is a nation forged by the bloody conquest of Barnabas Tharm, the dominant of Odin. The Canvarian War of Independence in 849. The Battle of the Twin Realms in 865. The Battle of Belinus Tor in 873. Wheresoever his armies fought, Odin was found where the fighting was fiercest. But of late, the warrior king appears to have laid his sword to rest. Battle rages for control of the crystalline dominion. Yet Tharm sends not a single ship in support of his Dhalmekian allies. Meanwhile, the Blight ravages great swathes of Ash. Yet warlike Waloed shows not the faintest interest in laying claim to untouched lands. So why go to the trouble of sending an army of orcs into the heart of Drake's Fang, only to make no attempt to claim the Mother Crystal for Waloed? It can hardly be for lack of men. Tharm's armies rival any in the Twins. No. We have not seen the last of the Waluda standard. Odin will ride again. It is but a question of when. And on that day, who will be trampled underfoot? In summary, I know not to what end the Royalists betrayed Kupka. I know only that it is part of some broader scheme. A scheme tied to the ambitions of one man. King Barnabas. But there is no need to wallow in confusion. If one is to cure a sickness, one must first identify the symptoms. And your Lord Uncle has volunteered to do just that by keeping an eye on the Royalists' movements. He's really throwing himself into this. Indeed he is. Which means all that remains for us to do is await his reports. Well, not quite all in your case. The people of the Hideaway must hear the news. Justice has been done. Hugo Kupka is dead. The wounds he left that night are still raw, especially for those who lived with Sid the longest. Tell them that those wounds might finally begin to heal. Consider it the price of today's instruction. I've never known you to be sentimental. What can I say? I am only human. And we are, all of us, sentimental animals at heart. I suppose we are. Very well. I'll go and spread the word. Karen, Blackthorn, Hippocrates, yes.
ये लोग मेरे हिसाब से बाकी सबको बता देंगे. Gav told me the gentleman who visited earlier, the one with the loud voice, was your uncle. तो चलो पहले कैरन को बोलते हैं, फिर ब्लैकथॉर्न और फिर Harpocrates. Well, someone looks pleased with himself. It's true what I'm hearing then. Nothing escapes you, Lady Karen. It's true. Kupka is dead. No more looking over our shoulders then. Good. I'm starting to get a crick in my neck. Don't let it go to your head though. एक आँख से अंधी है या फिर दो अलग-अलग टाइप के इसके आँख हैं, कलर के? Blackthorn, do you have a moment? What is it? I'm busy. I wanted to tell you that Hugo Kupka is dead. I can't tell you how long I've been waiting to hear those words. This is it then. A new beginning under a new Sid. I'll try to live up to the name. इसके जो आँख जो जिससे वो अंधी है शायद, ये इसके दाएं वाले आँख कोई वो नहीं है, आयरिस बोलते हैं या जो भी बोलते हैं बीच का, इसलिए मुझे लग रहा है अंधी है ये. Oh. It's a relief. Feels like we can breathe again. No more living in fear. Thank you, Clive. I know I don't say it often, but I mean it. Oh, and best of luck too. For many here, every other worldly woe paled in comparison to the threat of Hugo Kupka. Now he's gone. We'll finally have time to devote to everyday gripes and grumbles. And as the captain of this little ship, I'm sure you'll be on the receiving end of more than a few. If you're gonna buy some, be quick about it. Oh, damage ज़्यादा है पर टन कम है. टन कुछ ज़्यादा ही कम है, तो मैं नहीं लेने वाला इसे. Automatically charges magic spells and maintains the charge until cast. Oh, charge magic ये बुरा नहीं है. एक मिनट क्या? Increases limit break generation amount by 3% when taking damage, 6% when taking damage. और ये 3% 6% से ज़्यादा है. वाह भाई वाह. इतने सारे फायदे क्या है जब ये क्या बोलते हैं, ये खरीद लेता है. Better I'll be here. Finished, are you? फायदा क्या है जब उन्हें कहीं पे इस्तेमाल भी नहीं कर सकता हूँ यार सही में. What do you need? To a bloody riddance. If there was ever a man who deserved a rusty knife in the gut, it was that prick. Not that I would let you carry around a rusty knife. His death won't bring back the people we lost, but it will ease a few hearts. Mine included. Thank you. What do you want? 240, 225. Yes, of course ये बनाता हूँ मैं. Attack बढ़ रहा है और. It last you a good while. That it? चलो. Fine. ज़्यादा कुछ नया है नहीं. एक अपना क्या बोलते हैं हथियार तो बढ़ दिया कम से कम मैंने, और वो जो सेल करी थी कैरन उससे भी ज़्यादा अच्छा है. Harpocrates. Ah, Clive, have you come seeking the gift of knowledge? No. To share mine, actually. Hugo Kupka is dead. Oh my. Can it really be true? Look, he's crying. He is. The big baby. And with good reason, children. These are tears of joy. We must offer up a prayer to your parents that the heavens might weep with us. There shall be no lessons today, only thanksgiving and merrymaking. Go, put away your things.
All right. Brilliant. Finally, a new dawn has broken. It has. Thank you, Clive. I cannot wait to share the good news. Hippocrates. After Kuka fell, Ultima came to me. I need to know what he is. Have you learned anything? Alas, no. And not for want of trying. I have scoured nigh every historical tome in our collection and found nothing. Not even the sort of conspicuous absence that might suggest a concealment of fact. One is almost tempted to conclude that such a creature never existed. But I saw him. With my own eyes. I don't doubt that you did. Alas, it seems you are the only one who has. To others, he reveals naught. We see only that which he leaves in his wake, like some terrible force of nature beyond the ken of mortal man. A bringer of death. Whether the Ultima you met with was the being itself, or merely another projection of its power, I know not. But until I do, my investigations shall continue. Thank you. It means a lot. Right. Let's see if Otto has anything else for me. Is there something I might assist you with, Clive? Look around you. Still. Why? I have said it many times. His story is ended. Were you aware... But what of the twins themselves? Yes, change will come. I have compiled some new entries, if you would like to see them. Now this, I believe you will find most interesting. If you have a question for me, I should be happy to answer it. You are always welcome, Clive.
I'm never drinking again, no matter whose funeral it is. I'm telling you, it's true. I heard it from Otto's own lips. Hugo Kupka is dead. Oh, what a relief. You barely sat down since you came home. Vivian got you running errands or something? Just spreading the word. So, the Professor's got a soft side, has she? I'd never have guessed. No. She was right, though. Everyone was glad to hear the news. Ah, but you ain't told everyone. I can think of plenty of friends back at the old hideaway who'd sleep more peacefully for knowing. Not least of all Sid. You should tell him. You're right. I should. And I will. Well, when you do, be sure to take Mid with you. She's been going at it hammer and tong down in that workshop of hers, trying to do her father proud. I can't remember the last time she visited the old sod's grave. Very well. I'll suggest it. यार म्यूट में था, फिर से सही टाइम पे मैंने म्यूट नहीं निकाला। मैं बोल रहा था कि कहानी को आगे बढ़ाते हैं और एक बार क्या बोलते हैं, थोड़ा ज़्यादा ताकतवर हथियार मिल जाए तब ट्राई करते हैं वो एस क्लास वाले हंट को। The compendium of Rosarian verse. The rills run red with brave men's blood, and to the talent flow in flood, then out to sea. But those same souls whose souls are touched by flames and phoenix claws are clutched, and ne'er shall die. So dry thine eyes, thy groom is gone, but in thy babe his light lives on, and so shall he. You look just like a princess. And you look like the princess's sister. Let me know if you find any books worth reading. Oh, we've hundreds of them in the shelves. Why don't I show you round one day? Okay. अब यहाँ पे नीचे जाके मिड से बात करते हैं। होपफुली मालूम पड़ेगा इसने यहाँ पे क्या किया है। Think Mid might need some help tidying up that workshop. Think Mid might need well-meaning souls to leave her alone. She has it how she likes. थोड़ा वायर खिंच गया था। If I don't come up with something soon. All right, Clive? What do you want? I'm going to visit Sid, and I thought you might like to come with me. Sorry, I'm too busy for all that right now. I've got to get this thermal displacement stack sorted. Thermal... Displacement stack. Here. And this is for... Only the fastest, finest ship the world has ever seen. The Enterprise. Me and my dad designed it together. Where other vessels rely on the fickle winds to drive them through the water, ours is fitted with mithril engines. And those things have got more push than a behemoth in a bad mood, and more heat than all the hells put together. Which is where the stack comes in. I may have already talked some tight-lipped shipwrights into putting the hull together for me in a little dockyard in Canva. But the stack's a bit more involved, so I'm building it here. The thing is, it's so involved that I'm running behind and it's starting to hold things up over at the shipyard. I'll come and see my dad, though, when I'm done. Whenever that is. Is there anything I can do to help? Good old Clive. I were hoping you'd say that. First things first, I need some parts meching. The stack will be made up of 3 major components. There's the plating, here, that channels hot vapors away from the engine.
The helm over the top, that disperses all that heat into the air. And the shielding around the sides. That stops the rest of the ship from going up in flames. A full suit of armor, then. Probably best to take it one piece at a time. Then you'll need to start with the plating. Everything else fits onto it. I've got the designs and the list of materials here. Show these to Blackthorn. He'll know what to do. I can't make head nor tail of them. Luckily, you don't need to. Okay. The engine plating's basically just a very efficient conductor. Create a thermal gradient across it and the heat radiates outwards, which... You know what? Just show the plans to Blackthorn. He'll know what to do. लगता अभी के लिए जो भी करना है यहाँ पर ही होगा, कहीं जाएंगे नहीं हम। ओके, क्या कर सकते हैं? अभी के लिए यहाँ पर ही करते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। ओ, बहुत समय से यहाँ पे कुछ देखा नहीं था, देखे तो? How are you doing? Oh, same old. In it, Otto's got me reading through the reports coming in from our allies and picking out what problems need dealing with now and what can be saved for later. It was still early days back in the old place, so I could just handle the job myself. State of the world now though, I need Dee's help to sift through it all. And that's just the sifting. Actually solving any of these problems is a whole other headache. The cost breakers take the urgent stuff, but we're still stuck waiting for the volunteers to handle the rest. So, if you ever find yourself at a loose end, well, you know where to find me. It was luck, and luck alone. That saw me safely out of the hideaway that night. So many others didn't make it. I saw them, you know, in my dreams. I see them, you know, in my dreams sometimes. Always tell them I'm sorry that I wasn't able to save them. Now, I can tell them something different. That Kupka's dead. That you avenged them. And I know what they'll say back to me. So let me say it for them. Thank you, Clive. Clive. Oh, उसने बोले. Quick look. For great justice. एक side quest है. सिर्फ एक, सही में? नहीं, दो हैं. एक डालमेकियन रिपब्लिक में है और एक होली एम्पायर ऑफ सैंड्रेक. लॉस्ट विंग और ये डालमिल एग. Seen enough? ठीक है. और मैं क्या? अभी के लिए ये ख़त्म करता हूँ. ये मेड जो भी बनाने की कोशिश कर रही है. और उसके बाद ये एम्पायर की अगर एम्पायर की तरफ जाएंगे या वो ओडिन बंदे जो है उसकी तरफ जाएंगे, उसके एम्पायर जिस किसी की तरफ जाने वाले होंगे उससे पहले वो दो साइड क्वेस्ट कर दूंगा. Blackthorn, can I ask a favor? Out with it. It's for Mid. This is my last chance to say I'm otherwise engaged. Spare myself the arseache. Go on then. What is it this time? She said you would know. Here. Instructions on how to go about building oneself a full set of thermal plating to dissipate heat from around a metal engine, should one find oneself in need of such a thing. Krieger's Tates. Well, I don't know what the hell you'd want this for, but I can make it. Won't be easy though. And I'll need help. Get Gavin-Otto in here, will you? All right. So Mid's roped us all in here again, has she? Typical. Still, if that's what it takes to get her to visit Sid's grave, I'll do what I can. And, what is it we need to do, exactly? Take a look at this. It's this plating. The usual sword-grade steel won't work. We need something that can get very hot, very fast, and still keep its shape. That means an alloy. Something that won't break or buckle at the temperatures she's talking about. Which is where you lot come in. I need materials, and I've got my work cut out already. You'll have to fetch them. Now, there's a special kind of sand I'm after that you can only find out in the Valcroy. Stardust, they call it.
As for the rest of the stuff, my usual supply should have it in stock. It just needs buying and bringing back here. Well, we'll get it done quicker if we split up. One of us should probably give you an hand coat in the sand. And the other can go and get the rest from this supplier. Right then. Well, make your minds up who's going where, we can get this over with. Letting off steam 1. Beat with Blackthorn, letting off steam. Oh, fellas. Up to you who you take to the desert. I mean, Gav's giving a fight. You don't have my winning personality. Winning personality. Don't listen to him. You'll be in the lowest of low company with either of us. Winning personality लड़ाई में मदद नहीं करेंगे मेरी. You going after the Stardust then, are you? Which one of these two lucky souls is going with you? ऑटो को लेके जाते हैं. इन दोनों में से किसी के साथ कभी गया नहीं हूँ. गैव के साथ अगर कभी किया होता मैंने कोई भी मिशन तो मैं ऑटो को ले जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. पर गैव का भी देखना चाहता हूँ कैसे लड़ेगा वो. और फिर भी ऑटो जो लड़ नहीं सकता. You're with me. Most probably. All right then. Modest, and how will we know it when we see it? There's a river that runs through the southern reaches of the Velcroy. It's the black sand that washes up on its banks that you're after. And I'm guessing you'll be needing sack loads of the stuff. Might be worth our importers at the Dalimil Inn. I'll head down there. See about finding us a wagon. All right. I'll meet you by the river. You two take care, eh? I'll go and see the supplier. Just don't let the bastard fleece you, eh? He wouldn't do that. He's Blackthorn's mate. Isn't he? Best of luck. Make for the river in the south of the Velcroy. I'll head down to Dalimil, see about hiring us a wagon. Wait for me by the river. Don't you worry about me. I can smell a swindle from half the twins away. Okay. Oh, उतना भी दूर नहीं है. जल्दी पहुंच जाऊंगा उधर. सीधे ही जाता हूँ बल्कि. यहाँ पे नदी है क्या कोई? Yep. ये रही. Looks like I found the river. Now where's Otto? First destination nearby. Okay. Otto. Sorry I'm late. Oh, Clive. I had a quick scout about, and I reckon this area's our best bet. Seems Blackthorn's the only one who thinks smithing with his Stardust stuff's a good idea. It's just lying here, waiting for any old fool to fill his boots. But unlike any old fool, you thought to bring a wagon. Well spotted. Now get filling. Okay. Gather Stardust. किसके साथ लड़ाई होगी यहाँ पे? और कोई एक बड़ा बंदा तो होगा ही. ये हो गया. So this is Stardust. It just looks like black sand to me. ये रहा तीसरा. और बाकी तो नीचे कहीं होंगे. जानता था. एक और चाहिए मुझे. शिट. एक का है.
यहाँ पे डेफिनेटली नहीं होगा, ये नदी के पास ही होगा कहीं पर। यार कहाँ पे है ये? होगा तो नदी के पास ही होगा ना। ये रहा। This should be enough for now. Let's see how Otto's getting on. उसने भर दिया होगा अब तक मेरे हिसाब से, पूरा वैगन भर दिया होगा शायद। ओ नहीं, एक सैक भर लिया कम से कम। How much did you get? Enough, I hope. Legend has it that a star once fell from the heaven and punctured a hole in the Dalmatian desert, whence sprang forth the fountainhead of the river Velcroy. River of Velcroy था या river Velcroy था? More than me. Put it all together and I can't see Blackthorn complaining. Much. Here, Clive. Do you fancy a walk? Sid would be proud. Of what? Of you, you idiot. The way you've carried on what he started. When we first met, I had you down as a spoiled little puppy who enjoyed nothing more than biting the hand that fed you. But 5 years on, you're the one doing the feeding. So thanks for proving me wrong. You weren't wrong. But I changed. Thanks to Sid. And thanks to you. When I suggested taking on his name, you were the first to back me. And if you hadn't, no one else would have. I couldn't have done any of this without you, Otto. Yo, give over. You're making me blush. All I did was choose hope over despair. I gave you a chance, yes, but you're the one who took it. You took a rabble of homeless, hopeless outcasts and put them back on their feet. Gave them something worth fighting for, just like the old Sid did. About time I was heading back, I reckon. All this scrabbling about in the sand's taken its toll on the old pins. I'll see you back at the hideaway then. You can take a well-earned rest when you get there. Oh, I plan to. Believe you me. But I'll make sure Blackthorn gets his precious black sand before I put my feet up. He'll only moan otherwise. Right. Ready to go home, boy? अब फिर लेटिंग ऑफ स्टीम 2 शुरू होगा अभी ही या फिर कोई और मेन मिशन के बाद? अभी तो जाके मिड। Let's hope this is all Blackthorn needs. ब्लैकथॉर्न से पहले बात करना होगा क्योंकि वो बना रहा है। ब्लैकथॉर्न ऑटो मिडाडॉल टेलेमॉन। सिड का पूरा नाम सिड टेलेमॉन था। या फिर वो उसकी माँ का नाम था, शायद सरनेम था टेलेमॉन। मिड के माँ का ऑफ कोर्स। Blackthorn, got everything you need? Yeah. Yeah, I do. Cheers for the stardust. Should be enough to be getting on with. Nice to get out and about for once. Let's do it again sometime, eh?
I'll make a start on putting this thermal plating together then. It will take some time, mind. So if you've got other things to be getting on with, I could do without you breathing down my neck. Thank you, Blackthorn. I'll let Mid know construction's underway. तो ये 2500 हो गए अभी एबिलिटी पॉइंट्स. Suppose we'd better be getting back to work too. Give us a shout if you need anything. ओके मिड से हाँ रिपोर्ट बैक टू मिड. कोई नया नहीं है. किसी ने लेटर नहीं भेजा मुझे. सब भूल गए मुझे. हो गए. क्या कर सकते हैं अब. सीधे जाके मिड से बात करते हैं. देखते हैं क्या बोलती है. इतनी मदद कर दिया. No surprises there. Was the same. Ain't so bad stretching your legs once in a while. Should do it more often. क्यों इससे नहीं बात कर सकते हैं. मुझे लगा था ऑटो और गैप दोनों के ऊपर होगा वो बात करने का. When it comes to boyish charm, Goops has an indomitable rival in Gav. One is the sweet little babe in arms to be cooed over. The other, the naughty little boy who'd pull on my pigtails. Asta, hopeless romantic. Pigtails कहाँ हैं इसके? पता नहीं क्या pigtails की बात कर रही है. बाल भी उतने बड़े नहीं है पहली बात pigtails होने के लिए इसके पास. Editors started reading books that don't have any pictures in. Why would anyone want to do that? Edita, aspiring writer. I have done it, Sid. I have learned all the letters, every one. Nice. बंदी इतने बड़े होने के बाद सीख रही है. बहुत अच्छे है. On a lake lived a queen and goblins 3. But he'd not did the goblins their queen, and so, full of wrath, did she banish them to shore, where they supped on mud till their lips turned black, and they begged to return. And good of heart, the queen did take them back. Edita. अच्छी शुरुआत है, I guess. I knew it was a good idea to have editors study alongside the children. It's really stoked their competitive spirit. और कोई है यहाँ पे बात करने के लिए? ना. कूल. सही है. अपना खुद का बना नॉवल लिख रही है. अच्छी शुरुआत है. फेरी टेल जैसी. If I don't come up with something soon. You'll be pleased to hear that Blackthorn started work on the plating. Excellent. 1 down, 2 to go. So, what's next? The helm, of course. For this, we'll be repurposing fallen scrap. Salvage from the ruins? I thought that material was all but impossible to work. Ah, but we don't have to. I'm sorry. Just so happens there's one particular ruin that's broken into exactly the right shape and size pieces for what we need. What's the name back there? I'll give you all the details. What's her name? Right. Speak with Mid's assistant Helena. Talk to her back there. You know, thingy. She'll tell you exactly which bits of which ruin we need. You just need to go and find them. Oh, Sid, is this about the helm? Yes. Mid said I should speak with you. I'll show you the plans then. Here you see the mithril engine, in which mithril is burned to generate heat. That heat is then harnessed to produce motive force. Excess heat is dealt with by means of the thermal displacement stack, which disperses it into the surrounding air. Now, were we to rely on thermal plating alone to achieve this effect, the rate of excess heat buildup would far exceed the displacement coefficient of the plating. In other words,
the reactor would overheat and eventually explode. This is where the helm comes in. It connects to the plating, you see, and serves as a sort of thermal sink to absorb all that excess energy. Our experiments have shown that fallen ceramics are remarkably thermophilic. They can withstand and absorb levels of heat far above anything we are able to make today. And not only that, they're also waterproof and immune to rust, making them the perfect material for our protective hood. Why, if sea or rainwater were to enter the reactor proper, it would vaporize instantly. The forces produced would tear the ship from stern to... You can stop there. I understand. Mid said we might be able to use parts of a fallen ruin. Where would I find it? Ah, yes. It's in Lorbert's Pass, near Lostwing. The thing is, well, I probably should have arranged to have the pieces we need brought here sooner. You see, a certain unwanted visitor has taken up residence there. It's no longer a matter of just walking in and taking them. It's, going to be considerably more dangerous than that. I see. Then I suppose I'd better deal with this unwanted visitor for you. Would that help? Oh, very much. Thank you, Sid. I'll gather my team and head there right away. We'll meet you outside the ruins. Letting off steam 2 और 3 होने वाले हैं letting off steam क्योंकि 3 अलग अलग की बात कर रही थी वो. हर एक जो कंपोनेंट है उसके लिए एक सेपरेट लेग होगा क्वेस्ट का. ऊपर जाना होगा. Good day to you. यहाँ पे उससे कभी बात नहीं किया मैंने. The crystals we get from the tail are all but worthless. It's not just the crystals. Bearers are having trouble with them. जल्दी चल जा. यही है ना. और वो नीचे से है. यहाँ पे इसको देख के हमेशा लगता है कि ये यहाँ से ही एक रास्ता है, पर नहीं, वो नीचे से था. नीचे से है, नीचे से था नहीं. चौकोबो Ready, go? और चलो. उतना भी तेज नहीं है फिर भी चौकोबो के साथ, पर भागने से तो ज़्यादा तेज है कम से कम. अरे यार, और 100 के नीचे हो गया. Dismount. Make for Robert's Pass. कहाँ पे? वो किसे देख के इतना डर रही है? Oh, there you are, Sid. Thanks so much for coming. The, ruins are just over there, as is the creature I told you about, I'd imagine. Would you mind? Of course. I'll be right back. वहाँ पे एक छोटा सा हट टाइप का भी कुछ था ना? Oh shit. Okay, हट नहीं. हाँ, हट शायद. Anybody home? Oh, ये बंदा. This must be our unwanted visitor. Time to go. यार
slow. Oh, जा जा जा. मारते जा. Too slow. इसका लगभग हो गया. नीचे आ जा. अलविदा. अलविदा नहीं. ओह ये पीछे इस्तेमाल नहीं कर रहा है. दोनों के दोनों में जो स्किल्स थे टाइटन के मैंने बर्बाद कर दिया. Oh shit. Who's on? Oh. अबे यार. नहीं यार. नहीं करने लगा यार. तो निकाल दो इससे पहले कि फिर गलती कर दी. दोनों का वो गोल वाला आता है. Close. The things I do for you, Mid. Sid! Oh, thank goodness you're safe. You shouldn't have any trouble now. Indeed. Well, don't let us keep you. We'll, see that everything is transported safely back to the hideaway. All right. I'll let Mid know you're on your way. और ये quest हो गया. Second part. अब third part बचा है. Letting off steam 2, letting off steam 3 बचा है. Eye of the Warrior. Increases strength tonic duration by 10 seconds. Only those who have stood in battle can know its boon and its curse. A first-hand account of the siege of Stonehair. ये कुछ खास नहीं है, सही बोलूँ तो. सीधे. हाँ. चलो चलो सीधे इधर हाईवे पे ट्रैवल करो. और फिर क्योंकि जाके पूरा लंबा जाके मिड से बात करना होगा तीसरे भाग को शुरू करने के लिए. इतना दूर रहती है यार मिड. नाम क्या है उसका वैसे जगह का? मिड्स डंजन. We're seeing troops amassing at every border crossing. Oh, ये कुछ अलग बोलेगा? Ain't so bad stretching your legs once in a while. Yeah. Should do more. कुछ नया नहीं है. सेम ही है. ओके लगभग पहुंच गए थर्ड भाग शुरू करने के लिए. लेटिंग ऑफ स्टीम द थर्ड. उसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ फिर से लड़ाई वाला ही होगा. If I don't come up with something soon. Mid. Helena has recovered the material for the helm. She'll be along shortly. Excellent. Another job well done. And just one remaining. Right. Right, the shielding. This one's a bit of a bugger. How so? The plating's enough to stop the engines going pop, but those things will still be spitting out enough fire to set the rest of the ship ablaze. Which is why you need proper shielding. A prison for the dragon's breath that's blazing away inside. I thought a triple thick layer of tempered steel might do it. Or more of the stuff that the Fallen use, but they'd both be too heavy. The helm and the plating are bulky enough as it is.
Add any more weight and the whole ship would be at the bottom of the briny before we'd even started. I need something light. But I've racked my brains and I just can't think what to do it. Well, if I were in need of obscure knowledge, I know whose counsel I would seek. Hippocrates. Tomes? Yeah, well, I'd thought of that, obviously. I've got all the details written down here. Can you take this to him, see what he makes of it? Right away. I've been going round in circles trying to find something sturdy enough to withstand the fire of the engines, but light enough not to sink the ship. Should have bothered old Tomes sooner. If anyone knows something I don't, it'll be him. मैं उम्मीद कर रहा था ये मिड भी आएगी हमारे साथ, ताकि क्या बोलते हैं वो सीधे स्क्रीन ब्लैक हो जाए और फिर जब वापस आएंगे हम हिप्पोक्रेटिस के जगह होंगे. हाँ, हम मिड और हिप्पोक्रेटिस बात कर रहे होंगे. कुछ सीधे उधर तक जाने की जरूरत नहीं होगी बेसिकली. ये बस टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं, ऐसे जाते रहना. चलो करना तो है, ये मेन क्वेस्ट है, साइड क्वेस्ट भी नहीं है. ये बंद क्यों है यार? खुला रखो. अपने आप बंद हो गया. वाह भाई वाह. Hippocrates, do you have a moment? For you, Clive, always. Well, actually, it's for mid this time. Could you take a look at this? Thermal shielding designs, a baffling diagram made all the more confounding by the preponderance of question marks that blemish its borders. Shielding for a mithril engine? Whatever will that girl think of next? And what are these notes around the edges? She has some specific requirements for the materials. The shielding needs to be able to resist extreme heat on the inside, and yet remain cool enough on the outside not to set the ship alight, while also being light enough not to sink it. As you can imagine, she's struggling to find anything that meets her needs. I see. I wondered if you might know of a solution, or if you might be able to search the records for one. Perhaps it is not a different material she requires, but a different approach. What do you mean? Consider the lake we have made our home. Its blighted waters eat away far more quickly than fresh water or even brine, at timber and steel alike. And yet, we have made a home here from those very materials nonetheless. We have. But Bardolph must varnish every board twice over to keep it from rotting. And Obelus complains that without a constant supply of pitch. I see. Early Gregorian histories speak of a preparation known as moon dew. It is said to be able to resist even the most ferocious flames. Before the dragoons tamed the worms and wyverns of the realm, nobles would daub their castle walls with it in order to guard against dragonfire. So if we could recreate it... It might be applied to some material or other in order to provide the protection it requires. As to how best to apply it and to what material, perhaps Bardolph and Obelus might be of assistance. I shall speak to them and see what wisdom they might have to offer. If you would be so kind as to procure the necessary ingredients, I shall discuss the specifics of how it might be most effectively put to use with our two friends. The knowledge of the past may yet prove useful to we of the modern era. Thank you, Hippocrates. And since you're asking others to help you, perhaps I should too. So you need a hand, do you? We do. I'll be heading to market for the ingredients we need. I could do with some help. And some company too. The other can assist me in researching how best to prepare the shielding itself. Can we count on your aid?
Always. Well, if Jill's game. Thank you. I am sure either of these fine young minds would prove indispensable in my research. I leave the decision as to who will go with whom in your capable hands, Clive. Letting off steam, the third. Shielding that guards against even the most ferocious flames. We could have done with some of that on Drustinus. I doubt I would have survived that place with or without it. A trip to Northreach, though, I think either of us could handle. So, Clive, have you made your decision? Who will accompany you on your little excursion? तारिया के साथ क्योंकि अभी कभी गया नहीं हूँ. All right. So, what are we fetching? I have taken the liberty of preparing a list. Here. Garlic? Conch shells? Are you sure this is the right list? Looks like the ingredients for someone's supper. Though these items may seem mundane, they have potent effects that are rarely exploited. Effects for which they were once highly prized. So much so, in fact, that they were harvested almost to extinction, hence moon dews having fallen from favor. Now, of course, they can be obtained with ease. You should be able to find everything you need at the market in Northreach. Well, isn't that convenient? I was hoping to be able to make a trip over that way sometime soon. Need to speak to an old acquaintance. I'll meet you there. All right. Stay safe. See you later, Clive. Good luck with your research. फिर से दबा रहा हूँ जोर से, जबकि जरूरत नहीं है करने की. Not reach. मैं यहाँ पे जल्दी से ढूंढता हूँ. Where's Taya? Keep them pilchers nice and chilled. Need to stock up on I won't these. have you spoiling another catch. There you are, Taya. Ah, and there you are. We shouldn't have any problems finding what we need in a place like this. But if time is of the essence, perhaps we should split up. Take a few items each. All right. What shall I look for? Let's see now. Why don't you take the garlic and the pepio nuts? Meet me by the gate when you've got them. Don't tell me you've forgotten what you're looking for already. Garlic and pepio nuts. Do you want to take the list? Okay, garlic. Oh, कुछ नया है. Welcome. ये तो पूरा फुल है. Breath of the earth, raging fist. I'll be here if you need me. What do you want? Pepio nuts. If that's what you want. The edible fruit of the pepio plant is prized by chocobo breeders. Although the superstition that it lends a stud bird additional stamina seems largely founded on its blushing, stolen form than any quantifiable results. Thanks for nothing. There's talk that the Glassgate flood has finally spread to the worm. But that'd mean half of Oriflamme's under Aether. How the hell is anyone supposed to afford that from? Sub games मतलब भाई ना भाई? सब गेम्स क्या होता है? Any friend of the innkeeper is a friend of mine. I trust it's all here. Elementary alliums are a hallmark of classic Sanbrequois cuisine. So much so that it is a tradition for the emperor to award honorary titles to those responsible for supervising their cultivation and preparation in the White Worm castle kitchens.
the so-called garlic knight among them. Good day. That should do it. Hopefully Ty is finished too. Oh, okay. सोचूंगा वो. मैं ज़्यादातर सिंगल प्लेयर गेम्स खेलता हूँ क्योंकि भाई ना भाई मल्टीप्लेयर को-ऑप्स उतना खेलता नहीं पर देखता हूँ वो. Well, did you find everything? आपके पास कोई आइडिया है कौन से गेम के लिए? Yeah. गेम है आपके दिमाग में? Garlic and pepio nuts. Job done. We should get this back to Tomes then. He'll be waiting. But we're not in too much of a rush, are we? Quick chat. Do you know? जब मैंने ये I think Final this is the Fantasy very first time we've 16 been out on an errand together. I think you might be right. In all the years since you and that scowl of yours first appeared, you haven't invited me out once. For shame. Well, it seemed long overdue. And you did say you had some shopping to do. I was hoping to restock my supplies of herbs and liniment, yes. You and Jill alone burned through them like wildfire. No luck though. जिस दिन मैंने ये Final Fantasy 16 शुरू किया था ना भाई उस दिन मुझे एक दिन में 6 सब्सक्राइबर्स मिले. I'll ask Karen when we get back. वो मेरे हिसाब से एक दिन में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स था वो. Oh, just memories. I came here with Sid once, shopping for supplies, just like today. And just like today, I came away empty-handed. PC और मोबाइल का एक तो ब्राउन वाला आपका. For me when we got back. Has it really been 5 years? I remember it as if it was yesterday. सारे न्यू गेम्स पे नहीं आते हैं असल में तो. ये पहली बार है जो किसी गेम की वजह से इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर आए मुझे. It does. In a good way, of course. इससे पहले भी थोड़े नए गेम्स पे मैंने खेला है पर इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स कभी नहीं आए थे. तो वो भी है तब मैं क्या बोलते ट्विच में खेलता था. I just want you to know that all you've done for us. ये शिफ्ट करके सही में सही किया. It's appreciated. Do you think I'd stick around if I thought? Spider-Man already decided है वो definitely खेलूंगा मैं. Spider-Man 2 बहुत वेट कर रहा हूँ उसका. But in the spirit of sharing and caring. Spider-Man 1 और Miles Morales दोनों के मेरे पास प्लैटिनम भी है. You're appreciated too, by all of us. ऐसा लग रहा है क्रिस कर देंगे अपने आप को. ऐसे देख रहे हैं चुपचाप. आपने खेला स्पाइडरमैन 1 और माइल्स मोरालेस? I think we've tarried long enough. I ought to get these ingredients back to Tomes so he can make up this concoction of his. या फिर उसका गेमप्ले देखा है? All right? All right. And thanks again. I heard you the first time. Hippocrates फिर से. ये स्पाइडरमैन जो गेम है ना उसका ये इंसोमनियाक ने उसका वेब स्विंगिंग जो है बहुत ही अच्छा किया है. मज़ा आता है वेब स्विंगिंग करने में. वो स्पाइडरमैन इंसोमनियाक के स्पाइडरमैन गेम्स में बहुत अच्छा किया है उन्होंने. I wonder how Hippocrates is getting on with the moon dew. ये एकदम अगर जो आर्क होता है ना वो स्विंग के उसके एकदम सबसे नीचे वाले भाग में करो तो तुम स्लिंग शॉट की तरह आगे बढ़ते हो. थोड़ा स्पीड मिलता है और फिर उसके बाद वो ऐसे करते जाओ तो बहुत जल्दी आगे जाते हो. मज़ा आता है वो करने में. आर्या से बात करते पहले. Better late than never. We're ready to begin whenever you are. Welcome home.
he had a successful trip. How's work on the shielding progressing, Hippocrates? Well, very well indeed. And thanks in no small part to your kind assistance. I was just explaining to Taya how we might best go about preparing the moon dew. And now that we have all the ingredients, स्पाइडरमैन का मैं बस सोच रहा हूँ वो उसका सब कुछ एक ही मैप में होता है न्यूयॉर्क का जो है I've mixed more than a few mysterious concoctions in my time. उसे चेंज कैसे करेंगे मैं वो सोच रहा हूँ क्योंकि स्पाइडरमैन 2 भी सेम एरिया में है work is underway under the watchful eyes of Bardolph and Obolus. Apparently, it'll be ready soon. Thank you. All of you. Right then. Jill, would you join me in the infirmary? Many hands make light work and all that. Of course. Oh, and Clive. It was good to talk. We should do it again sometime. It appears our work here is almost at an end. A shame. I was enjoying playing the man of action for once. When both the shielding and the moondew are ready, it will merely be a matter of applying the one to the other. Followed by a rigorous process of testing and retesting, of course. Perhaps someone ought to warn young Mid of that. Leave it to me. Thank you, Hippocrates. क्वेस्ट कंप्लीट मेरे हिसाब से ये आखिरी है वाला होगा अब बस बनाने का है वो जो भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं मिड ओह उससे याद है I better go and give Mid the good news then. पहले एबिलिटीज में जाना है मुझे और इसका ये रहा ना बहुत ही ज़्यादा स्टैगर करता है डैमेज भले ही ज़्यादा कुछ नहीं करता है तो ये ज़्यादा स्टैगर करने के लिए इस्तेमाल करना होगा बड़े बड़े जो एनिमीज होंगे उनके खिलाफ भाई ना भाई आप ये जो ब्रॉनहला है वो हफ्ते में कितने बार खेलते हो We're seeing troops amassing at every border crossing. Think Mid might need some help. ना कोई ज़रूरत नहीं उससे मदद की बस अब ये ख़त्म हो जाएगा आउट ऑफ द शैडो Sorry to keep you waiting, Mid. But you'll be pleased to know that work on the shielding is underway. You found something for it? In a manner of speaking, Hippocrates knew of a substance that's highly resistant to heat. A coating that should provide the protection you need. He's supervising the construction and testing of the shielding as we speak. Brilliant! I knew you wouldn't let me down. Don't thank me. I'm just the errand boy. Right then, better start working out how to bolt all these bits together. To the Black Hammer! ये एक्सप्लेन कर रही है पूरा You know, when I got into the smithing game, I thought I'd be making swords and shields, not thermal bleeding didgeridoo-dahs. Displacement stacks. Same difference. Whatever you call it, I ain't putting it together in here. It's cramped enough as it is. Let's take this outside. Mid, you get all the parts lined up on the deck. I'll take care of the rest. On my way! Oh, and bring me the biggest hammer you can find. This is gonna require some precision walloping. ना फेशियल एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं था उसने का सम टाइम लेटर और हमारा शिप बन गया क्या कुछ ना कुछ तो यूज होगा उस शिप का हमारे लिए
ओह वेल, हमारे लिए नहीं लगता है, ये इस शिप के लिए। It's finished! It's finally finished! Thank fuck for that. I'll be feeling my hammer arm for weeks. Thank you, Clive, Blackthorn, everyone. That's one down and just 3 more to go. I'm sorry. Oh, didn't I tell you? The Enterprise has 4 mithril engines, and we'll be needing a displacement stack for each. You don't mean... Don't worry. Now they've got a finished one to work off, my gang in Canva can build the rest. Good luck to them, I say. Right, I'm off to get a sling for this elbow. Any other work comes in, keep it to yourselves, eh? Speak with Mid. What's the matter? Nothing. Just daydreaming. Thinking about the Enterprise sailing off over the horizon to shores unknown. Searching for a land untouched by the Blight. Just like me and my dad planned. So if the worst came to the worst and every scrap of soil in the Twins turned black, we might still have a chance. That's what she was meant to be. You see, one last chance just in case we needed it. But now she's so close to being finished, I've realized I don't want her to be that. I don't want her to be just a lifeboat for us to cling to if things get desperate. I want people to sail aboard her by choice, not from the lack of it. In a world where we're not just trying to survive, but where we can actually live. I'm working on that. And I'll do everything I can to get you what you want. Don't you always? All right. My mind's made up. As soon as the Enterprise is fit to sail, I'm putting her under your command. Sod our plans, I'm trusting in yours. Are you sure about this? Something tells me it's what my dad would have wanted. He'd be proud of you. You were gonna visit his grave, weren't you? I was. And you can come too now that your little project is finished. Right. There's just one thing I need to finish up first. Won't be a mo. All right. I'll let Otto know you're coming. Meet us in the mess when you're ready. Aye, aye, Captain. A new quest is available nearby. Speak with Otto. Is that the thing help to build? Yeah. He said it was some sort of tool. चलो ऑटो से बात करना है ना अभी, इसके लिए मैं गलत तरफ जा रहा हूँ। ये मुझे लगता है आखिर में इस्तेमाल होगा, आखिरी के फाइट में ये उड़ेगा, ये पूरा का पूरा शिप। Told me she was building a ship. Really? That's a ship. Let's sail it around the lake. Finally गैप से बात कर Is रहा that हूँ। you done then? Mid's not roped you into building the rest of the board, has she? चलो आगे बढ़ने से पहले सेव करता हूँ। और स्ट्रीम सही बोलूँ तो अभी के लिए यहाँ पर ही बंद करता हूँ। काफ़ी देर हो गई है, 8:30 हो गए हैं। मुझे वीडियो भी अपलोड करना है यूट्यूब में, उसके डिटेल्स वो सब डालने हैं, थंबनेल बनाना है। तो बाइनो भाई, स्टड भाई और वॉल्टन भाई भी होंगे यहाँ पे। तो स्ट्रीम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के स्ट्रीम में। हाँ, मैं बस पूछ रहा था कि ये कितने बार खेलते हो ब्रॉन हॉला हफ्ते में बाइनो भाई, मैं बस वही पूछ रहा था। मैं यूजुअली ये जो स्ट्रीम करता हूँ ना सिंगल प्लेयर गेम्स वीकेंड में, ये थर्सडे फ्राइडे मेरा वर्क फ्रॉम होम होता है, तो उस समय काम जब नहीं कर रहा हूँ तो डेस्टिनी खेलते रहता हूँ मैं एक्चुअल में। दो उसे स्ट्रीम नहीं करता हूँ मैं, बस डेस्टिनी मज़े के लिए खेलते रहता हूँ। क्योंकि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ये 3 दिन ही है जहाँ पे मुझे कुछ खेलने का समय मिलता है, सही बोलूँ तो।
तो ये मैं ऑनलाइन गेम कोई वीडियो गेम नहीं, मोबाइल गेम हो भी तो मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेल पाऊंगा। मेरे पता नहीं क्या कर दिया इन्होंने ऑफिस में, मेरा नेट काम ही नहीं कर रहा है फ़ोन का कहीं पे भी। अब कभी कभी जहाँ पे मैं बैठता हूँ वो वहाँ पे कभी कभी हो जाता है। बहुत परेशानी हो रही है, क्या हो गया सडनली? पहले ऐसे कुछ इश्यू नहीं होता था ऑफिस में, सारे जगह काम करता था अच्छे से नेट, पर अब नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। और आजकल सारे के सारे मोबाइल गेम्स के लिए ऑनलाइन कनेक्शन होना जरूरी है। हाँ वेल, जैसे मैं कह रहा था, सड भाई और बाइनो भाई भी स्ट्रीम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वॉल्टंटा भाई को भी स्ट्रीम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आपसे अगले हफ्ते ही मिलूँगा, अगले सैटरडे। तो अभी के लिए स्ट्रीम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे अगले सैटरडे मिलता हूँ, तब तक के लिए अलविदा।